Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can. Sir, what's your command? Your team is banning. The Immortal One chose me to Your vanquish the team is shadows banning. that plague this world. No one can escape my iron Your fist. team is banning. It's my job to protect her Is there. banning. Let's go. Your team is banning. Butterflies born by thy wish, Your team is guided picking. by lantern's light. Always on the way. Your team is picking. Only love Let's and fight night to our heart's are content. Your everlasting. team is picking. I am not the only one bound by these chains. Your team is picking. हेलो देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका एक और नए राउंड में बैटल ऑफ एशियंस। और यहाँ पे जो है बहुत ही खूबसूरत दो टीम है हमारे सामने। एक है ब्लू साइड पे हमारी है, ठीक है भाई, और दूसरी तरफ है हमारी डकर ई स्पोर्ट्स। और इनको कौन नहीं जानता, हमारी जो डकर ई स्पोर्ट्स है काफी जानी मानी टीम रह चुकी है, और इनके हमने काफी सारे जो गेम्स है वो भी कास्ट किए गए हैं। मैं हूँ आपका कास्टर सुन रहा हूँ, मेरे साथ जो है जुड़ चुके हैं मेरे को कास्टर यूना जी। तो कैसी हैं आप? I mean, I'm doing good. And what about you? ये मेरे भी बहुत ही बढ़िया हाल है। और इसी के साथ बैन का अगर हाल देखा जाए तो यहाँ पे बैन भी काफी अच्छे हैं।
और दूसरी तरफ अगर देखा जाए वहां पे कैरी को बैन किया गया है। चौथा बैन जो है कैरी की तरफ से जो कैरी है वो बैन कर दी गई है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ बैन में नीतन को बैन किया गया है। नीतन जनरली दिखता नहीं है बैन। शायद जो है रिस्पेक्ट बैन हो सकता है या फिर अपने कंफर्ट पिक का जो काउंटर है वो बैन करना चाहते हैं। और लास्ट जो बैन हमें देखने को मिलेगा डकर स्पोर्ट्स की तरफ से क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे। शायद जाएंगे हाइलोस। हाइलोस भी अभी जो है नहीं, हाइलोस तो नहीं उठाएंगे क्योंकि मटिल्डा ऑलरेडी जो पिक है वो रोम पे उन्होंने उठा रखी है। तो शायद जो है किसी और तरफ जाना चाहेंगे। बीट्रिक्स को यहाँ पे बैन किया गया है, नहीं देना चाहते हैं बीट्रिक्स को क्योंकि बहुत ही यूटिलिटी वाले एमएम है। मतलब किसी भी सिचुएशन में उनको ढाल सकते हैं इस तरह से ये एमएम है। उनको जो है यहाँ पे बैन कर दिया गया है। और इसका जवाबी हमला क्या देखने को हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है भाई की तरफ से क्या यहाँ पे हमें बैन देखने को मिल सकता है। अभी तो जी मैं सोच ही रही थी हाइलस बोलने ही वाली थी, पर उन लोगों ने बैन कर दिया है हाइलस को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हीरो है। इसका जो सस्टेन है और इसका जो मोबिलिटी है, जब टीम फाइट आता है तो वो ग्लोरियस पाथ में इतना अच्छा मोबिलिटी देता है अपनी टीम को, तो वो स्पीड दे देता है और एनिमी ओपोनेंट टीम को वो स्लो डाउन कर देता है। ऊपर से उसका वो सस्टेन और वो रिंग ऑफ पनिशमेंट होता है, बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे से खेल सकते हो तो ये हीरो टीम फाइट के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और अगर आप नहीं ले रहे हो तो बैन करने का ऑप्शन इज द बेस्ट, क्योंकि ये ओपोनेंट को दोगे तो आपको ही डिसएडवांटेज मिलेगा। और अभी देख सकते हैं कि ठीक है भाई ने ये हीरो बैन कर दिया है। अभी ये मॉस्कप दिखा रहे हैं, मेलिसा दिखा रहे हैं, देखते हैं कौन सा हीरो पिक करने वाले हैं गोल्ड लेन में। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हल्का सा जो है हवर किया जा रहा है अलग अलग एमएम्स के ऊपर, या फिर जाएंगे यहाँ पे हैरिथ के ऊपर। हैरिथ भी जो है एक मैं कहूंगा बहुत अच्छा पिक हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे हल्का सा विमर्श किया जा रहा है टीम के साथ। थोड़ी बातचीत की जा रही है कि यहाँ पे क्या पिक किया जाए, मॉस को पिक करना यहाँ पे ठीक रहेगा या फिर जो जाएंगे हैरिथ के साथ या फिर जाएंगे लैला। हर एक एमएम के ऊपर यहाँ पे हवर किया जा रहा है और उसी के साथ हमारी भावनाओं के साथ जिस तरह खेला जा रहा है यहाँ पे। और उठा लिया गया है एलिस, और यहाँ पे एलिस हाइपर हमें देखने को मिल रही है टूर्नामेंट में। कहना चाहता हूँ एलिस हाइपर काफी अच्छा सस्टेन कर लेती है, तो अगर वो इस गेम में आएंगी तो जो ये बैटल फील्ड है, ये यहाँ पे जो ये महायुद्ध हो रहा है, इस महायुद्ध में एलिस का जो हमें सस्टेन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही सस्टेन के साथ साथ एक गेम चेंजिंग एबिलिटी जरूर रखती है। विंटर ग्राउंड के बाद इनका जो हील आ जाता है एक बार को, विंटर ग्राउंड ऑफ होने के बावजूद ये जो है हील कर लेती है। इनकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं कहूंगा एक तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ग्रैंजर का डेथ सोनाटा हमें देखने को जरूर मिलेगा। यूना जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। अभी देखा जाए तो दोनों टीम्स का जो पिक्स है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लाइक अच्छा पिक कर लिया दोनों ने ही। लाइक अर्ली गेम में भी अच्छे तरह से वो डैमेज दे सकता है और लेट गेम में भी वो अच्छे से डैमेज दे सकता है। तो बहुत बहुत एक कंप्लीट बैलेंस टीम लाइनअप बन चुका है दोनों टीम से। और जो हमको लास्ट पिक देखने को मिला जो था हमारे डकर ई स्पोर्ट्स से, वो था फ्लोरिन टाइमिंग की। इस सीजन में फ्लोरिन का जो मोबिलिटी है वो भी अच्छा है और उसका हील जो ब्लूम से आता है और उसको थोड़ा सा उसका फर्स्ट स्किल भी उन लोगों ने बफ कर दिया है, तो बहुत अच्छा रेंज भी बढ़ गया है। तो अच्छा होगा सपोर्ट में, क्योंकि वो हील भी करती है शील्ड भी करती है, वो बहुत ही अच्छी सपोर्ट है, तो टीम फाइट में बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, और इसी के साथ देवी और सज्जनों हम आ चुके हैं लैंड ऑफ डॉन में। और लैंड ऑफ डॉन के साथ साथ यहाँ पे अपने अपने जाएंगे खेती बाड़ी की तरफ। अपने अपने जंगलर्स जो जाएंगे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और हम देख सकते हैं दोनों ही जंगलर जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जाएंगे वो सीधा गोल्ड लेन में, यहाँ पे जैसे लेवल 4 होंगे। और यहाँ पे इसके साथ मिड लेन पे यहाँ पे बहुत जल्दी क्लियर कर लिया गया है मटिल्डा की तरफ से, और जो मेज है वो जा रहे हैं ऊपर ही एक्सपी की तरफ। और इसके साथ जूलियन ब्लू बफ लेते हुए नीचे जो है अपनी सॉरी ऊपर जो है यहाँ पे अभी फोबियस वगैरह जो हल्का सा पोकिंग बाजी चली जा रही है उनकी तरफ से। और इसी के साथ यहाँ पे जो लूकस है उनको पीछे होना पड़ेगा। डैमेज दिया है, पोक किया है उनको, और वो पीछे होकर आराम से जो है थोड़ा सा सस्टेन करेंगे अपने आप को। और इसी के साथ यहाँ पे मिड लेन दोबारा से क्लियर करने के लिए आ चुके हैं। मटिल्डा जी भी आ चुकी हैं पोक करने के लिए। इनको दरअसल मैं उड़न खटोला बोलता हूँ मटिल्डा जी को, क्योंकि अपने साथ साथ ये खुद तो उड़ती रहती है और उसके साथ अपने टीममेट्स है उनको भी उड़ा के ले जा लेती है। और शायद अर्ली गेम पे हमें थोड़ा सा पोकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जूलियन की तरफ से पोक करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिलेगा, पीछे हट जाएंगे सही समय पे। और बॉटम लेन पे ग्रैंजर अकेले पकड़ने की कोशिश करेंगे। सेकंड का प्रयोग किया गया, स्टन जो यहाँ पे क्रॉप कंट्रोल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपने जो ग्रैंजर भैया पीछे हो जाएंगे। और अभी जो टर्टल है वो आने वाला है, तो वो देखना पड़ेगा किस तरफ जाएगा टर्टल। थोड़ा सेटअप करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पे कोई अननेसेसरी फाइट देखने को नहीं मिली। दोनों ही टीम जो है हाँ भाव करके हल्का सा पोग वगैरह करके पीछे की तरफ खेलेंगे,
क्योंकि अभी जो ये टर्टल आने वाला है यहाँ पे जो है ये फाइट जो है थोड़ी अच्छी होने वाली है। हाँ, अभी तो टर्टल आने वाला है रिवर एरिया में, तो देखते हैं किस टीम को मिलता है फर्स्ट टर्टल, क्योंकि फर्स्ट टर्टल से आपको एडवांटेज में मिलेगा। और अर्ली गेम से ही आप अगर हाथों में अपना ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा मिड गेम के लिए। और दोनों टीम रिवर एरिया में देखते हुए वो लोग अपने हाथों में कंट्रोल लेना चाहते हैं इस एरिया का, कि वो लोग टीम फाइट में अच्छे से रह सके और उनका पोजीशन भी बनाए रहे। और देखा जाए तो डकर ई स्पोर्ट्स टर्टल्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और उधर मटिल्डा है जो अपना विजन दे रही है अपनी टीम को, और अपनी एलिस दीदी भी आ चुकी है रिवर एरिया में। और यहाँ पे लूकस जो है लग चुके हैं, पीछे से जाना चाहते थे, उनको पकड़ा जाएगा अकेले में, डैमेज देने की कोशिश, बहुत ही लो एचपी, फर्स्ट ब्लड यहाँ पे फोकस उठाते हुए लूकस का, और उसके साथ गए पीछे की तरफ, वहां पे डैमेज देने का जोन इन देखिए किस तरह से किया जा रहा है। टर्टल बहुत ही इजीली, ठीक है भाई को मिलने के पूरे चांसेस, और उसी के साथ जो छोड़ दिया है टर्टल की उम्मीद यहाँ पे डकर स्पोर्ट्स ने, उन्होंने अर्ली गेम पे उन्होंने बोला कि हम इससे ज्यादा किल नहीं देंगे, एक कैजुअलिटी हमारे लिए बहुत है, और बहुत ही डिसिप्लिन गेम प्ले में कहूंगा, पीछे हट गए, उनको पता है कि फालतू की फाइट नहीं लेना, ओवर एक्सटेंड नहीं करना है, और पीछे हट के अपने फार्म की तरफ जाएंगे, फार्म करेंगे वहां पे जूलियन। अभी इस समय ब्लू बफ की तरफ गए हैं, और उसी के साथ पे बॉटम लेन पे आ गए हैं उनके दोनों ही रोमर, और उसी के साथ यहाँ पे दोनों ही रोमर अब जो है फार्म कर रहे हैं, सॉरी जो एमएम है और रोमर दोनों ही जो है यहाँ पे फार्म कर रहे हैं। अल्ट का प्रयोग करेंगे, मटिल्डा जी उड़ा के ले गए थे, लेकिन यहाँ पे रोका जाएगा, ग्रेंजर को डैमेज देने की कोशिश, और इसी के साथ पीछे होना पड़ेगा ग्रेंजर को, डेथ सुनाता मारने की कोशिश की गई थी, डैमेज दिया है लेकिन पीछे होना पड़ेगा। और यहाँ पे जूलियन भैया भी आ चुके हैं, अपनी अल्टी का प्रयोग करेंगे, लेके गए हैं यहाँ पे एलिस को, उनको दिया है मृत्यु दंड, और इसी मृत्यु दंड के साथ पीछे होना पड़ेगा, एमएम को हल्का सा जो है ध्यान से खेलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक और गैंग होने की संभावना बन सकती है, और इसी के साथ बनते हुए सेकंड्स का प्रयोग करके स्टन दिया गया है, लेकिन पीछे हट जाएंगे मटिल्डा डी, और टावर जो है ये जाना चाहेगा, जो गोल्ड है वो पूरा चूस लिया गया है, और इसी के साथ अपने लूकस भैया आए वापसी करने के लिए, पीछे भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरह से डैमेज दिया जा रहा है, पीछे होना पड़ेगा, बहुत ही लो एचपी, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले में कहना चाहता हूँ। वो झाड़ी में छुपे हैं, वो चाहते हैं कुछ गैंग करना, लेकिन उनको स्पॉट कर लिया गया है मेज की तरफ से, डैमेज देके उनको जो है पीछे भगाया जाएगा। अभी तो देखा जाए तो सिसिलियन बहुत ही अच्छा खेल रहा है, जब भी टीम फाइट हो रहा है वो पीछे से आके अच्छे से डैमेज दे रहा है। और जूलियन भी है, क्योंकि जूलियन का जो फर्स्ट डैमेज है वो अभी मेटा में है, और उसका स्किल कॉम्बो सभी अच्छे से दिखाई दे रहा है। पर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड में दोनों ही जी बिल्कुल, स्कोर बोर्ड में दोनों ही जो है एक एक किल के उसमें है, कोई ज्यादा अभी हाव भाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्कोर बोर्ड चेंज होने का चांसेस बढ़ सकता है, क्योंकि ग्रेंजर के ऊपर हमला किया गया है और डैमेज देने की कोशिश, फोबियस अंदर घुस चुके हैं, नहीं छोड़ेंगे अब ग्रेंजर को, मारा गया है एमएम के द्वारा, नीरज चोपड़ा जी हमारे डैमेज देते हुए यहाँ पे, उसी के साथ अपनी जान बचाते हुए बहुत ही लो एचपी पे, एक एचपी पे यहाँ पे मारा गया है नीरज चोपड़ा जो है बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए, और इसी के साथ यहाँ पे फ्लोरिन बहुत ही कम एचपी पे बचती हुई, उनको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा, डबल किल फोबियस उठाते हुए, लेकिन ऊपर एलिस अकेले मर गई है वहां पे, और नीरज चोपड़ा का भाला जरूर लगा है वहां पे, वो आना चाहेंगे इस बैटलफील्ड पे, या फिर जाएंगे अपनी लेन पे, अपनी लेन पे ही जाना चाहेंगे, लूकस की तरफ से डैमेज देने की कोशिश, लेकिन वेलेंटीना बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उनको जो है मारा, लूकस को उनकी अल्ट चुरा के, और उन्हीं के साथ आईएमयू का प्रयोग किया था, वहां पे मारा गया है लूकस जी को, वो चले गए अपने रिस्पॉन्स स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे मिड लेन पे सिसिलियन जी यहाँ पे आ चुके हैं, उसके साथ डैमेज देने का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे फाइट जो है काफी अच्छी जो है फाइट हमें देखने को मिली है दोनों टीम की तरफ से, लेकिन अभी जो पड़ाव है वो ब्लू टीम की तरफ जाता हुआ, ठीक है भाई कि अभी जो टेबल्स है वो उनके पडले जो है वो भारी हैं, और दूसरी तरफ डकर स्पोर्ट्स अभी थोड़ा सा जो है स्ट्रगल करने की उसमें आ गई हैं, क्या वो इस स्नोबॉल इफेक्ट को बना के रखेंगे, या फिर यहाँ पे कुछ गलती हमें देखने को मिलेगी, और इसका जो फायदा है वो डकर स्पोर्ट्स उठाना चाहेंगे, यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरह से गेम जाएगा यूना जी। गेम का बस अर्ली फेज है और मिड फेज आना बाकी है, तो लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी तो देखा जाए डकर स्पोर्ट्स थोड़ा लैग में थोड़ा पीछे है, पर वो बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट करे कि हम कैसे जाकर घुस के उनको मार के ट्रेड्स ले सके, वो गोल में हम लोग आगे बढ़ सके और ऑब्जेक्टिव ले सके, ताकि वो लोग आगे बढ़ सके स्कोर बोर्ड में। पर हमको देखा जाए कि रिवर एरिया में फाइट हो रहा है, और एलिस ने सिसिलियन को मार दिया है, हमारे चमगादड़ वाला दादाजी उधर मर चुका है, जूलियन जाते हुए ऊपर मॉस्को के ऊपर, पर उनको पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि उधर फ्लोरिन दीदी आ चुकी है, और ऊपर से एलिस दीदी भी आ चुकी है, अभी जूलियन दादा मरने वाले हैं डेस्टिनी के हाथों से, और एलिस दीदी ने मार दिया जूलियन दादा को रिवर एरिया में।
जी हाँ, कॉफिन में उनको जो है दफना दिया गया था। उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, अकेले पकड़े गए थे, लेकिन यहाँ पे अकेले पकड़े जाएंगे ग्रेंजर भैया, मौका नहीं दिया जाएगा। किलिंग स्प्री यहाँ पे उठाती हुई एलिस, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले, और इसी के साथ जो मृत्यु दंड दे दिया गया ग्रेंजर को। ग्रेंजर भैया की हालत खराब, उनको भेज दिया गया है रिस्पॉन्स स्क्रीन पे। उसके साथ कछुआ महाराज हमारे आ चुके हैं, और ये कछुआ महाराज इजीली ले जाएंगे यहाँ पे टीम ठीक है भाई की तरफ से। भी देख यहाँ सकते हैं पे कि शायद वीडियो जो, में। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो टर्टल है वो इजीली लेके गए हैं, और मिड लेन पे शायद फाइट हमें देखने को मिल सकती है। टॉप लेन पे यहाँ पे बहुत ही मुश्किल पे पीछे होना पड़ेगा। और देखिए वैलेंटीना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है चुरा लिया है लूकस का, उसके साथ उसका प्रयोग उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है। आई एम यू का बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रयोग किया गया। लूकस जो है लाइबिलिटी बन चुकी है अपनी टीम के लिए, और वैलेंटीना बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानती है कि किनका अल्ट चुराना है। और इसी समय यहाँ पे देखिए, और रिवाइटलाइज का प्रयोग किया गया यहाँ पे हेल्थ बचाने के लिए फोबेस के द्वारा, और अपने टीममेट्स को जो है हील का प्रदान यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिड लेन नहीं जाना देना चाहेंगे। ये टावर मिड लेन का उसी तरीके से यहाँ पे फार्म कर रहे हैं, और उसके साथ मिनियन जो है वो क्लियर कर देंगे। टॉप लेन पे देखेंगे तो ठीक है भाई का एक जो है टावर अभी प्लस है, उसके साथ बॉटम लेन ग्रैंजर लगे हुए हैं, वो शायद बॉटम लेन पे जो टावर है वो भी चला जाएगा इसके साथ। और प्ले पे शायद हमें कुछ कशमकश देखने को मिल सकती है। नीरज चोपड़ा भाले का प्रयोग करते हुए सिसिलियन पीछे से आए हैं, डैमेज देने के फुल प्रयोग यहाँ पे अल्ट का प्रयोग किया गया है, लेकिन फोबियस पीछे से आए हैं, अल्ट का प्रयोग करेंगे, उसी के साथ डैमेज देने की कोशिश, उनके साथ देखिए डिमोनिक फोर्स का किसी ना कुछ पूरी तरीके से प्रयोग करते हुए, और उसके साथ टीम ईएसपी पीछे होना पड़ेगा करी स्पोर्ट्स को, लेकिन नहीं, डबल किल निकालते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हुए, और उसी के साथ यहाँ पे अच्छी की तरफ ट्रिपल किल निकालने की कोशिश, निकाला जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मृत्यु दंड यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसी के साथ टीम अगर स्पोर्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करती थी, और ये जो पारी है 13-13 की, यहाँ पे जो स्कोर बोर्ड देखेंगे हम वहां पे चलता हुआ, और उसके साथ जो फार डिफरेंस है वो चलता हुआ 5K की तरफ। And now we can see that Dakar esports are really into the pressure. They are losing their territories one by one, and only the inhabitants are standing. Only two tiers were there into the middle, and one is taken down. And looking into the goal gap, there is a 6K goal difference between these teams, and it's not looking really good, But still, they need to look out for a good opportunity to come up so they can get the trade and get some goal cat cover up. And they are just looking for that moment because they have the Sicilian onto the hand for the late game assurance, but still they need to get something. The every time they're into the team fights, their position is getting interrupted, and the Moscow he's playing right now. He just from that bottom, he just went to the top using that spirit of destruction and just took down the skills as well. The Phobos is playing very well, giving the damage and giving a lot of sustain into the team fight. And it's kind of annoying, and we can see the Phobos going in with it in front of Wizard over there, but he's really low onto that HP, and he is falling back with the help of the Matilda. हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ जो फार्म डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं हमें दिखता हुआ, और ये जो गेम है एक तरफ पलटता हुआ हमें देखता हुआ, और इसी के साथ यहाँ पे टीम जो है स्नोबॉल का पूरा प्रयोग जो है यहाँ पे उठाया गया है। और इसी के साथ आइटमाइजेशन की अगर बात करें हम लोग, तो आइटम है ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुके हैं काफी अच्छे खासे, और मॉस्को का जो टिनिटी बिल्ड वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो डैमेज जो है अभी नीरज चोपड़ा जी बहुत ही ज्यादा करने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जूलियन जी का जो है रोज गोल्ड भी आ चुका है, तो हल्का सा बचने के चांसेस, उनके जो सर्वाइवेबिलिटी है थोड़ा सा जरूर बचेगा यहाँ पे। मिड लेन का जो टैरेट है, सेकंड टैरेट, वो लेने की जरूर कोशिश करेंगे। एलिस पीछे से आई है, डैमेज देने का प्रयोग, और उसी के साथ सस्टेन करते हुए डैमेज लगातार दे रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। ज्यादा गलती करेंगे, ओवरस्टेंड करेंगे, तो यहाँ पे मृत्यु दंड जरूर दिया जाएगा। पीछे होने का कोशिश, और इसी के साथ बहुत ही कम एचपी पे एलिस बाल बाल बची हैं, और इसी के साथ लॉर्ड जो हमारे यहाँ आ रहे हैं टॉप लेन से, वो पधार रहे हैं इस समय। और इस लॉर्ड के साथ वो जरूर चाहेंगे कि ये जो टरेट है वो जरूर निकाला जाए, इन्वेटर टरेट। अगर ये टरेट निकाला जाएगा तो इसके साथ जो प्रेशर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा टीम डकर स्पोर्ट्स के लिए। और यहाँ पे ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन जो है प्रदर्शन दिखाती हुई हमें पीछे सही समय पे हट जाएंगे, ज्यादा जो है ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाहती हैं। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन, जितना हो सकता है पुश उतना ही करेंगे, जितना डैमेज दे सकते हैं उतना ही देंगे। और ये अर्ली गेम लॉर्ड था, तो इसका जो है बहुत ही जल्दी क्लियर भी हो जाता है, तो ज्यादा वो दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही इजीली जो है डिफेंड किया गया है टीम डकर स्पोर्ट्स की तरफ से। Yes, definitely. And it was a first slot, which can be easily defended out. And the team Dakar Esports did it well. But still, a lot of pressure is into their head. Already their inhibitor is only standing out there.
And yeah, I was talking about only the inhabitants are standing out there and theaters have fallen down. So I guess with the second lot, it could be the end because they are already really back into the damage as well. The goal difference is really huge to cover up as well. The second lot will be kind of really hard to defend out. जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो लॉर्ड शिव शंभू है, वो उनका जो दूसरा रूप है, रौद्र रूप में अगर आएँगे, तो ये जो है डिफेंड करने के लिए थोड़ा दिक्कत तो ज़रूर देगा। लेकिन क्या पता, ये गेम जो है बहुत ही अलग है, हमारा मोबा 5v5 बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, हारता हुआ गेम भी जीता जा सकता है, लेकिन परंतु यहाँ पे दंड दिया जाएगा लूकस को। झाड़ी में घुसे थे और उसका पनिशमेंट देने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन हील आता हुआ लूकस का काफ़ी बेहतरीन हील हमें देखने को मिला यहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी कोशिश करेंगे अल्ट और डैमेज देने का प्रयोग करेंगे। डैमेज बहुत ही अच्छा सिसिलियन का आता हुआ पीछे से और वैलेंटीना को जो है पीछे हटना पड़ेगा। और इसी के साथ बाल बचे हैं यहाँ पे हमारे लूकस जी, उनको जो है पीछे हट गए थे, उनको जो हील है सही समय फ्लोरिन का पड़ गया था, जिसके कारण वो बच गए। लेकिन ये लॉर्ड की संभावना अभी भी जाती हुई अपनी जो ठीक है भाई ये टीम की तरफ बहुत ही अच्छे से जो है प्रदर्शन करती हुई, और उनके जो टीम है भैया, अगर ये लॉर्ड उनको मिलेगा तो वो जो है बहुत ही बेहतरीन रहेगा। And we can already see the second lot also has been taken away by the team TKY very easily without any competitions, and they have that lot on their hands, and it will be soon marching, and it will be kind of really hard for the team Dakar Esports because they only have the inhabitants into their hand as well. The blessings have already gone away. So it will be kind of hard, but still, they can defend out if they execute it very well into the well position, and they need to be really careful once the team fight will be breaking in with the Lord marching in from the top lane, and they need to look out as well. They need to protect out their backliners, the one who will be dealing a lot of damage, especially the ADC. So let's see whether the team Dakar Esports will be able to defend out or not, because the Lord is marching, attention is a lot building into their heads, and also the Alice is there as well. The Phobia is going in, the one who is sustaining a lot as well. The Alice is dealing the damage, and there is the Moscow giving a lot of damage on the back, and we can see that the Phobia is going in with the Infernal Blizzard, but he'll be backing off as well. The Lord is there as well. Valentina has already copied down the ultimate of Lucas, unleash the base, and the Valentina opening the unleash the base as well. The battery is coming, and that was a mega kill coming from the Alice onto the Lucas. The Moscow giving a lot of damage as well, Florin providing a lot of heal from the back, and we can see the Lord has been defended out, but two of the inhabited are taken away. यहाँ से बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे जो है डिफेंड किया गया, और यहाँ पे जो है अभी एंड होने के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं क्योंकि नीरज चोपड़ा वहां पे रहेंगे और टैरेट को जो है डैमेज देंगे, और उसी के साथ ये निकाल लिया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई की तरफ से एक विक्ट्री, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन विक्ट्री हमें दिखती हुई, और लेके गए हैं वो जीत का परचम यहाँ पे लहरा दिया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले उन्होंने दिखाया यहाँ पे। डगर स्पोर्ट्स स्टार्टिंग से स्ट्रगल करती हुई थोड़ा सा, और यहाँ पे जो है वो स्ट्रगल मेंटेन रहा, उन पे कंटिन्यूसली जो प्रेशर है वो बना के रखा, और इसी के साथ ये जो मैच है वो लेके गई है ठीक है भाई की टीम, और 3-14 का स्कोर से। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.
Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold outside, break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. चलिए दोस्तों, एक और जो है नेक्स्ट राउंड यहाँ पे आ चुका है और उसी के साथ मैं हूँ आपका कास्ट शिनरा और हमारी जो है दोस्ती के साथ जो हमारे जो दोस्त है भैया उनकी वापसी हो चुकी है। जय भाई, तो आइए आप। फर्स्ट मैच आपने शायद मिस कर दिया था यहाँ पे। दूसरा मैच आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो टीम है एक जो है वो है ठीक है भाई, दूसरी तरफ हमारी डकर ई स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन मैच हमने पहला मैच देखा। जो पहला मैच है वो ले गई थी हमारी ठीक है ठीक है भाई की तरफ से। और यहाँ पे अभी जो ये मैच है टीम वापसी का एक ही मौका मिलेगा यहाँ पे। क्या जो है टीम डकर ई स्पोर्ट्स वापसी कर पाएगी या फिर यहाँ पे क्लीन स्वीप करके ले जाएंगी ठीक है भाई ये विक्ट्री? जी सुंदर भाई, बिल्कुल। यहाँ पे जो यहाँ पे देख पा रहे कि जो मातिल्डा है हमारे उन्होंने खटोला और फिर आपका जो जुशिन है, फिर यहाँ पे एरिथेल जो ग्रेंजर का काउंटर है, फिर फेनी अच्छा खासा हमें बैन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों टीम जो है वो जो बैन और पिक जो पिक करने वाले उसके रिगार्डिंग जो बैन है वो बैन बहुत ही बढ़िया बैन हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन लोगों का दिमाग में ऑलरेडी है कि कौन सा हीरो लेना चाहिए, कौन सा हीरो काउंटर पे पिक पे लेना जरूरी है और किसको हीरो को बैन करना पड़े। तो उनको यहाँ पे शायद ऐसा सोच के आया कि क्लियर माइंडेड है भाई, ये बैन रखना है, उसको पिक करना है। तो फिलहाल तो हम बैन की देखेंगे, फिर जो बैन होने के बाद जो हीरो पिक होगा उसके ऊपर जो आगे हम बता सकते हैं कि लाइक कौन सा टीम जीत सकता है और कौन सा टीम को जो है थोड़ा सा पल्ला भारी देखने को मिलेगा हमें। जी हाँ बिल्कुल, दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा ब्लू साइड पे हमारी जो है डकर स्पोर्ट्स, रेड साइड पे जो है हमारी वो है ठीक है भाई। और यहाँ पे जो मटिल्डा बैन किया गया है ये शायद रिस्पेक्ट बैन है, क्योंकि पिछले मैच में मटिल्डा हमने देखी काफी जो है बैटलफील्ड पे उथल मुथल मचाई हुई थी। ग्रेंजर को जो है लगातार यहाँ पे पोक किया जा रहा था मटिल्डा के द्वारा, उनको जो है मतलब टावर के अंदर घुस घुस के मारा गया था। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मटिल्डा उनको जो है बैन कर दिया गया है और उसी के साथ यहाँ पे स्यू बैन हमें देखने को मिला है ठीक है भाई की तरफ से।
और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो है बैंस हमें देखने को जरूर मिले हैं जय भाई। और उसके बाद पहला पिक किस तरफ जाता हुआ यहाँ पे हमें मिलेगा, यह हमें जूलियन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या बादाम ओपन है, यहाँ पे बादाम भी हमें देखने को मिल सकता है जय भाई। जी बिल्कुल शिंदे भाई, यहाँ पे देखिए आपको जूलियन भी दिख सकता है, बादांग भी दिख सकता है यहाँ पे, या फिर आपका जो है ना, आजकल मेलिसा बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है गेम। मेलिसा पिक भी हो तो मैं कोई मतलब वो नहीं होगा। इसी के साथ शिंदे भाई क्या पता मतलब क्या बात बताया आपने, इसी का जो बादाम हमें देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे जो है पहली बार मुझे कुछ अलग पिक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ग्रॉक के ऊपर होवर किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट पे अभी तक मैंने देखा नहीं है, मेरे से जितना भी मैंने टूर्नामेंट पे कास्टिंग किया शिंदे भाई, कि ग्रॉक पिक होते हुए क्या आपने देखा है? देखिए इस टूर्नामेंट की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जरूर देखे हैं एक दो जगह पे ग्रॉक पिक। और जो ग्रॉक प्लेयर्स हैं भैया वो भी बड़े खतरनाक होते हैं, जो डेडिकेटेड प्लेयर होते हैं ना उनका ग्रॉक भैया बहुत अलग होता है। और इसी के साथ यहाँ पे जो है सिसिलियन भैया उनको उठा लिया जाएगा। और यहाँ पे नेतन पे हवर किया जा रहा है, शायद क्या उठाना चाहेंगे नेतन, यहाँ पे उठाना चाहेंगे कि नहीं अभी। यहाँ पे ठीक है भाई की तरफ से क्या हमें देखने को मिल सकता है, हवर तो जरूर किया गया है, कुछ सेकंड्स में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे उठा लिया गया है हाइलॉजी को, घोड़ा मानव यहाँ पे उठा लिया गया है। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मैं पिक कहूंगा, ये उसी के साथ यहाँ पे अरोरा को उठाया गया है। थोड़ा जो है सीसी जरूर देंगे यहाँ पे, अरोरा नहीं चाहते हैं जो इन पे जो है चार्ज किया जाए, उसको उनको रोकने के लिए जो है यहाँ पे सीसी वाली मेन यहाँ पे उठाई गई है, वो है हमारी अरोरा जी। क्या कहना चाहेंगे जय भाई इसके बारे में? जी बिल्कुल शिंदा भाई, यहाँ पे जो ऑरोरा को उठाया गया बहुत ही अच्छा पिक मैं कहना चाहूंगा। जो उनका जो स्किल्स है, सारे तीनों स्किल जो सीसी बेस्ड स्किल आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो भी स्किल, इसी के साथ देखिए हेरित को लिया जा रहा है। आई थिंक ये हेरित जाएंगे गोल्ड लेन पे। जो हेरित आजकल गोल्ड लेन पे दबदबा बना कर रखा है शिंदा भाई, वो बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग को ना आजकल ज्यादातर हरित को बैन देखने को भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका हरित पिक किया गया बहुत ही शानदार, और साथ में साथ जो एलिस है, यहाँ पे एलिस को भी पिक कर लिया गया है। तो हीरो जो पिक हो रहा है, अच्छा पिक हो रहा है। साथ ही साथ जो है पिक जो हम बोल सकते हैं कि दमदार पिक हो रहा है। यहाँ पे एलिस जो है लेट गेम में जो है थोड़ा सा जो है आपका ब्लू टीम को जो थोड़ा सा वो मतलब जो उनके रीजन की वजह से जो है थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। अंडरग्राउंड जब यूज करते हैं एलिस अपने स्किल के साथ, तो उनको कोई डैमेज तो लगता नहीं, लेकिन जो उनके आसपास जो भी होता है एओई जो डैमेज होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है, उसको मैजिक डैमेज जो मिलता है। तो बढ़िया पिक मैं बोलना चाहूंगा, दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है हमें। जी जी जरूर। और मेरा आवाज तो आप पहचान रहे होंगे जय भाई, मैं वापस आ गया हूँ। आपको और शिनरा भाई को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, और वो भी सेमीफाइनल्स हो रहा है बैटल ऑफ एंशिएंट में। तो कैसे यहाँ पे मैं बिना कुछ कहे बाहर रह सकता हूँ? जय भाई पहचाने की नहीं मुझे आप? और एसटीजी भाई क्या हालचाल? मैं अपने छोटे भाई को पहचानू ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो एसटीजी भाई। जरूर जरूर। वैसे क्या हाल चाल है वो तो मैं बाद में बताऊंगा अपनी, लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो पूरा रंगमंच में भरे पड़े हैं हीरोज, और भरे पड़े हीरोज में बहुत सारे हीरोज को तो निकाल भी दिया गया है ड्राफ्ट से। वैसे क्या सीन चल रहा है अभी? पॉइंट्स में क्या मतलब घटाव है या बढ़ाव है? टीमों के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी मिल सकती है? ठीक है भाई, तो लग रही है रेड साइड में बहुत अच्छी। और इस तरफ से यहाँ पे डकर ई स्पोर्ट्स भी काफी हद तक जो है अपना जलवा दिखाने आ गई है। तो इन दोनों टीमों में से आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, और पहला मैच क्या हुआ है? थोड़ा दर्शकों को बोल सकते हैं, मुझे भी थोड़ा जानकारी मिल जाएगी उससे। या जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एसटीजी हुआ भाई। है, अभी बताना चाहता हूं मैं आपको। अभी जो हुआ है फर्स्ट गेम यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके गई है गेम। और एक तरह से मैं कहूंगा दबदबा यहाँ पे बनाया हुआ है, तो प्रेशर जो है अभी यहाँ पे वो जो है अभी डकर ई स्पोर्ट्स की तरफ यहाँ पे लगा, मतलब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर अभी रहेगा। उनको वापसी करने का ये एक लास्ट मौका, अगर यहाँ पे हार जाएंगे तो क्लीन स्वेप हो जाएगी यहाँ पे डकर ई स्पोर्ट्स, और बहुत ही इजीली जो है यहाँ पे जो ठीक है भाई की टीम वो इजीली विक्ट्री ले जा लेगी। तो यहाँ पे लास्ट मौका मिला है टीम डकर स्पोर्ट्स को वापसी करने का। जरूर। टीम डकर स्पोर्ट्स को तो ये मौका मिला है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ यहाँ से कि जो टीम डकर स्पोर्ट्स बना रही है, ये सिर्फ मौका नहीं, ये तो फिर मौके पे चौका मारने की कोशिश करे। यूटिलिटी जंगलर अकाई के साथ जा रही है, टीम बदांग है रोम में। अगर आप ईएक्सपी देखोगे तो एओई से भरा पड़ा है, क्योंकि उसमें एक्सबॉग है। अगर आप गोल्ड लेन को देखोगे तो हैरिस जैसा एक ट्रिलोजी मेटा एमएम है। अगर आप मेज में मतलब मिड लेन में देखोगे तो स्टन करने के लिए उनके पास अरोरा है। तो पूरा जो है डिफेंसिव स्टाइल अप में वो लोग गए हैं। तो ये इसको भेद कर जाने के लिए, गोली बनने के लिए, ठीक है भाई को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास है एलिस। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि एलिस कितनी अच्छी डैमेज डीलर है, और जंगलिंग में वो अर्ली गेम से ही डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है। तो वहां पे जो अभी हालचाल है, दोनों टीम बहुत सुंदर दिख रही है। जय भाई आपको क्या लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, कौन जीतेगा यहाँ पे? ठीक है भाई या फिर
डकर स्पोर्ट्स। जी देखिए वो बिल्कुल तो यहाँ एसटीजी पे भाई। मैच ही बताएगा कि किस तरह से यहाँ पे जाएगा। जो है अर्ली गेम पे जिस तरह से फाइट होगी वो वहां पे किस तरह से जो है टीम अपनी जो है वो लेके जाएंगे, क्योंकि हमने दरअसल देखा यहाँ पे अगर एक बार स्नो बॉलिंग का इफेक्ट मिल गया यहाँ पे ठीक है भाई को, तो वो मौका नहीं देते ही कम बैक करने का। तो अगर यहाँ पे अगर डगर स्पोर्ट्स को यहाँ पे कम बैक करना है तो उनको हल्का सा थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। कोशिश ये करनी होगी उनको कि जो है उनको अर्ली गेम पे स्नो बॉलिंग का मौका ना दे। अगर ये इस बात पे अमन कर शायद डकर स्पोर्ट्स का यहाँ पे जो है वो कमबैक देखने को हमें मिल सकता है। जरूर जरूर, और इसी के साथ दोनों लाइनअप है तैयार, दोनों लाइनअप बहुत सुंदर दिख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे आज। और पहला मैच जैसे आपने बोला कि ठीक है भाई ने दबदबा मचा के जो है अपने हाथों में ले लिया था, तो ये दूसरा मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये मैच पॉइंट मैच बन सकता है। ये मैच अगर ठीक है भाई जीत जाती है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि अपना जो गुरूर है वो आ जाएगा उनमें, क्योंकि और सिर्फ एक मैच जीतना होगा उन्हें बेस्ट ऑफ 5 के सीरीज में। दोनों टीमों ने अपना खेती लेना स्टार्ट कर दिया है। आगे बढ़ाइए इस मैच को शिंद्रा भाई। जी हाँ, यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी जो है चले गए अपने अपने खेती बाड़ी की तरफ और अपने अपने जो है बर्फ की तरफ वो जरूर लेंगे। यहाँ पे देखिए जिस तरह से हेल्प किया जा रहा है अपने कुंफू पांडा जी वो आ चुके हैं और वो इजीली जो है यहाँ पे रेड बफ भी ले लेंगे। और उसके साथ देखिए जाएगा ब्लू बफ की तरफ यहाँ पे आने में थोड़ा एलिस को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको जो है जंगल स्पीड हल्का सा स्लो रहेगा यहाँ पे। और अकाई भी वो आ चुके हैं उनके जंगल पे थोड़ा सा जो इन्वेट करने की कोशिश, छोटा वाला क्रीप यहाँ पे मारने की कोशिश की जाएगी। बदांग यहाँ पे देखिए जिस तरह से विजन यहाँ पे देने की कोशिश जरूर करेंगे। और उसी के साथ हाईलॉस पीछे से तैयार है, वो आना चाहते हैं यहाँ पे जो हल्का सा जो है डोमिनेंस अपना दिखाना चाहते हैं। एलिस यहाँ पे थोड़ी सी जो है मुसीबत में उन्होंने देख लिया, उनको जो है उनका जो भांडा है वो फोड़ दिया है। वहां पे पता लग गया था कि वहां पे भाप लिया है कि वहां पे कोई ना कोई जरूर होगा। और उसी के साथ लेवल 4 होती हुई एलिस और अपने को मुपांडा जी अभी भी लेवल 3 है, लेवल 4 अभी नहीं हुए हैं वो, तो लेवल 4 यहाँ पे होना पड़ेगा उनको। और उसी के साथ यहाँ पे हल्का सा दिखे जिस तरह से डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है और डैमेज देने की कोशिश की गई है। बादाम को हल्का सा जो है डैमेज दिया गया था, यहाँ पे मेल्टन को जो है यहाँ पे पकड़ा गया है। यहाँ पे उसी के साथ उनको जो है बहुत ही अच्छा सीसी देने की कोशिश, कुंफू पांडा का फर्स्ट ब्लड यहाँ पे अल्ट का प्रयोग करेंगे, हट बाइट स्पिन और उसके साथ रोका जाएगा यहाँ पे घोड़ा मानव को और उनको भी जो है पेनल्टी यहाँ पे दी जाएगी। डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे मृत्यु दंड यहाँ पे दिया गया है। और टॉप लेन पर शायद एक और मृत्यु दंड हमें देखने को मिल सकता है एक्सबॉक्स की तरफ से। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है डैमेज देने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ जो शील्ड है यहाँ पे पॉप ऑफ हो जाएगा। अपना जो एक्सबॉक्स का है उनको जो थोड़ा सा जो है पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि डैमेज अभी ज्यादा लग चुका है। अरोरा वहां पे आई है सपोर्ट करने के लिए जरूर, लेकिन अभी मैं कहूंगा हल्का सा जो तो शील्ड अप नहीं होता है, थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। एक्सबॉक्स को हल्का सा संभल के खेलना पड़ेगा अभी। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट गेम यहाँ पे होने वाला है। बॉटम लेन पे डैमेज देने का जरूर यहाँ पे कोशिश करेंगे। हैरिस ने काफी अच्छा डैमेज दिया है, लेकिन ऊपर टर्टल लेन पे हमें कुछ फाइट देखने को जरूर मिलेगी यहाँ पे एसटीजी भाई। जी मतलब सुंदर, अति सुंदर जो है स्टार्ट दिया है यहाँ पे डकर स्पोर्ट्स ने। ये मैच उनके लिए बहुत मायने रखता है और इसी मैच में उन्होंने जो है दबदबा पहले से अपने और खींच लिया। अभी देख सकते हैं एक्सबॉक्स और टीम जो है पूरी मदद कर रही है टर्टल को चुराने के लिए। बैट इंपैक्ट का थोड़ा सा जो है प्रेशर आता हुआ पीछे से, लेकिन जो है कछुआ महाराज को इजीली अपने और खींच लेंगे। टीम डकर स्पोर्ट्स पहला कछुआ महाराज लेकर 1000 गोल्ड जो है अपने हाथों ले लिए और साथ ही साथ अभी गोल्डन रोटेशन देने के लिए जा रहे हैं। गोल्डन में एक छोटा सा गैंग देखने को मिलेगा। जोन आउट करने के लिए अपना पहला पंच यूज किया है बदांग ने, छुपे हैं वहां पे। एक फाइट हमें देखने को मिल सकता है, 3 आदमी अभी भी आ रहे हैं। फ्लेजर ग्लेशियर का सुंदर सा इस्तेमाल और इसी के साथ अल्ट दे दिया है यहाँ पर पांडा जी ने और एओजी का सुंदर सा प्रयोग। 3 बंदे वहां पे चित हो रहे की कोशिश और इसी के साथ एलिस की अल्ट ने लिया है बदांग का जान और उसी के साथ यहाँ पे पीछे से बैट इंपैक्ट से किया है हमला और डबल किल चुराते हुए यहाँ पर एलिस जी, एबिस की क्वीन यहाँ पर रंग दिखाती हुई अपनी इस युद्ध भूमि में अपना जो है जकड़ बना रही है। 2-2 का स्कोर बना चुकी है और साथ ही साथ आप देखिए कितना ज्यादा डैमेज जो है नतान दे रहे हैं। यही मैं उस दिन आपको बता रहा था, आपने देखा था कि ठीक है भाई के जो नतान थे उस दिन कंफर्ट पिक लेकर उन्होंने मैच जीता था, फिर से आज वही स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। तो क्या आपको दिख रहा है? और इसी के साथ देखिए सुंदर तरीके से खेती को चुराया, खेती को अपना बनाया। मैं हमेशा कहता हूं कि जरूर आप शादी कर लियो, बीबी आपके पास है, लेकिन अगर बीबी किसी और के साथ घूम रही है तो फिर बच्चा कहां से होगा? खेती आपके पास है, खेती अगर आप नहीं ले रहे हो, किसी और को दे रहे हो, तो फार्म कैसे होंगे? आपके गोल्ड कैसे बढ़ेगा? आप मैच में दबदबा कैसे लाओगे? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपकी खेती पे खाद कोई और डाल जाएगा तो जरूर है कि फल और फ्रूट जो है उसमें लगने वाली सब्जी भी जो है वो जरूर दूसरा बंदा लेके जाएगा। जिस तरह यहाँ पे पहले सभी आई थी उनके फार्म में और उनका जो भैया जो सामान था सारा, उनका जो फल फ्रूट था वो लेके चली गई हैं। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए जिस तरह से आए थे मेल्टडाउन, थोड़ा सा डैमेज दिया था यहाँ पे हाइलस को
और बदांग जो है अभी भी लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा चाहते हैं कि किसी को पकड़े यहाँ पे, लेकिन भांप लिया गया है मेज की तरफ से। वहां पे उनको पता है कि यहाँ पे रहेंगे बुश पे तो पीछे रहेंगे मेज, बहुत ही समझदारी से खेलते हुए। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई गलती यहाँ पे नहीं दोहराना चाहते पिछली बार की तरह, जिस तरह से पिछली बार जो हमने देखा गया, पकड़ा अच्छा था परंतु कहीं ना कहीं वो डैमेज की कमी जो हो गई थी और ओवरस्टैंड के कारण वहां पे उनको जो है भुगतान करना पड़ा, क्योंकि रिसोर्सेज सारे वेस्ट हो गए थे। और उसके बाद पीछे से जब एलिस वगैरह आई तो वहां पे किल निकाले गए, लेकिन यहाँ पे शील्ड अभी जाएगा एक्सबॉक्स का, पीछे होना पड़ेगा एक्सबॉक्स को। और उसी के साथ एलिस यहाँ पे आई है, एल का प्रयोग करते हुए डैमेज देने की कोशिश, लेकिन वो कोशिश थोड़ी सी जो है नाकाम सी रह जाएगी। पीछे होंगे बदांग आए हैं, एओजी का प्रयोग किया जाएगा परंतु कोई नहीं पकड़ा गया। हाइलोस का जो है ग्लोरियस पाथवे यूज किया गया परंतु कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। उसके साथ मेल्डोन जी आए हैं, स्टन करने का प्रयोग पकड़ा है, एल्ट का प्रयोग करेंगे, वॉल पे पकड़ लिया गया है परंतु फिर से वही यहाँ पे पीछे से डैमेज नहीं आता हुआ, डैमेज इतना है नहीं और है अकेले पकड़े जाएंगे। गैंग बैंग हो गया है वहां पे, 4 बंदे को का डैमेज यहाँ पे लेते हुए एक्सबॉग आए हैं, डैमेज दिया दोबारा से लेकिन बहुत ही अभी वर्नेबल रहेंगे। और उसी के साथ डबल किल, देखिए सिसिलियन जिस तरह से पीछे से डैमेज दिया है। मैं कह रहा हूँ कि हल्का सा जो है डैमेज की कमी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और उसका भुगतान वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसी के साथ कुंफू पांडा जी वो आ चुके हैं कुंफू दिखाने अपना, वो दिखाएंगे जरूर अपना कुछ हेड स्पिन वगैरह वगैरह वाला कुंफू। और यहाँ पे अपना पेट का इस्तेमाल करते हुए मार रहे हैं यहाँ पे मिनियंस, और बॉटम लीन का जो टरेट है वो जरूर बचाएंगे, लेकिन उनका जो खेती बाड़ी दोबारा से चुरा लिया जाएगा एलएस के द्वारा। एसटी जी भाई, आपने ट्रेड देखा क्या? आपने ट्रेड देखा कि किस तरीके से टर्टल उन्होंने लिया, लेकिन यहाँ पे 2 किल जो है वो समावेश में अपना बनाया है इस टीम ने। ग्लोरियस पाथो का सुंदर सा प्रयोग, और यहाँ पे देखिए फ्लिजर ग्लेशियर आ चुका है, एओजी वहां पे पड़ गया है, लेकिन बैटफिश से बहुत कमाल का डैमेज आता हुआ पीछे से यहाँ पर जो है एलिस लेंगे किलिंग स्प्री और रोरा को भेजेंगे स्वर्ग के द्वार। साथ ही साथ बदांग ने किया है थोड़ा सा ऑफ, लेकिन एलिस डबल किल चुराते हुए पांडा को किया है घायल। पांडा नहीं खा पाएंगे मोमो, पांडा जाएंगे यहाँ पे चाइना वापस। और साथ ही साथ जो है खेती पे फिर से आतंक मचा रहे हैं। आपने बोला खाद वो डाल रहे हैं, लेकिन फल कोई और खा रहा है। खाद तो जरूर यहाँ पे पांडा जी डाल रहे थे, कछुआ महाराज अपना बनाया था, लेकिन जो खेती है उनका जो बफ है उसको चुराया लिया जा रहा है हमेशा के लिए। इसको वर्टिकल लेनिंग का नाम दिया गया है, वर्टिकल जंगलिंग का नाम दिया गया है एमएल के सिनेरियो में। वर्टिकल जंगलिंग का मतलब ही यही होता है कि आप अपना कम दूसरों का ज्यादा खाओ, दूसरों का खेती में ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि उसी से जो है आपका जो सामने वाला जंगलर होगा वो ज्यादा फार्म नहीं हो पाएगा, वो कमजोर बन जाएगा। और जब कमजोर कड़ियां मिलती है तब सामने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर कमजोर जो कड़ियां रहेगी वो जो चेन है जल्दी ही टूट जाएगी और उनकी जो विक्ट्री की संभावना है वो भी जरूर टूट जाएगी। लेकिन यहाँ पे पकड़ा जाएगा कुंफू पांडा को, कुंफू पांडा निकलने की कोशिश, अल्ट का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, 2 बंदे पीछे खींचे, उसी के साथ पीछे हट जाएंगे। कुंफू पांडा का बहुत ही अच्छा कोशिश किया था उनको जो है टैरेट के अंदर लाने का परंतु नाकामयाब। और इसी के साथ एलिस फिर से उनके जंगलों पे चली गई है खेती बाड़ी करने के लिए, उनका जो है खेती बाड़ी चुराते हुए, लेकिन यहाँ पे एयूजी का प्रयोग किया था। लेकिन देखिए सिसिलियन भैया का डैमेज, इतना ज्यादा डैमेज आता हुआ पीछे से कि चमगादड़ उड़ा उड़ा के मार रहे सिसिलियन भैया। जरूर जरूर जरूर, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कितना ज्यादा डैमेज अभी दे रही है टीम। ठीक है भाई, बैटफिश का सुंदर सा ये प्रयोग, और यहाँ पे स्लो करते हुए फ्लिकर को यूज करना पड़ेगा, फोर्सिबली किया है फ्लिकर को यूज बचने के लिए वहां पे। और अभी हम देख सकते हैं कि यमराज जी से पहले जो आखिरी कछुआ महाराज होता है इस पे अपना अत्याचार, मतलब अत्याचार नहीं, अपना अधिकार जो है समाया है टीम ठीक है भाई ने, और अपना बनाया है इस कछुआ महाराज को। अत्याचार तो यहाँ पे टीम डकर ई स्पोर्ट्स के ऊपर हो रहा है, उनको सीधा काटा जा रहा है, डक्स को मारा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जैमन फोर्स का सुंदर सा यूज, एओई डैमेज से परेशान करती हुई हैरिस ब्लिजर ग्लेशियर का एक स्टन आता हुआ, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा और अंदर घुस गई है एलिस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंशन को। और यहाँ पे देखिए वो आइस क्राउन जो है वो यूज कर दिया गया, लेकिन एलिस की इस ओवर एक्सटेंशन को जो है मात देती हुई हैरिस लेंगे एक सुंदर सा किल, और साथ ही साथ जो है और एक टर्रेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे से देखिए मिनियंस क्लियर करते हुए एक्सबॉक्स, सुंदर सा प्रयोग था, किल लेने की कोशिश थी, लेकिन ओवर एक्सटेंशन को मिलेगा पनिशमेंट। और साथ ही साथ एलिस को खून खून की नदियां जो है बहा दी जाएगी हैरिस की तरफ से। एलिस को उस खून की नदियों से बहाकर वो हेवन के टूर में भेजेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और जो इसके साथ जो है जब आप जीतने लगते हैं गेम तो हल्का सा जो है एक मैं कहूंगा हल्का सा जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन इसी बात का ध्यान रखना है कहीं कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए और आप ऐसी गलती ना कर बैठे जिसका फायदा जो है आपके अपोनेंट्स उठा लें।
और वो गलती अगर दोबारा देखने को मिली तो भारी पड़ सकती है यहाँ पे ठीक है भाई की तरफ से। इनका भी ये जो है ठीक है भाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले दिखाते हुए सिसिलियन को पकड़ा जाएगा। अकेले पीछे से डैमेज देने की कोशिश की रही थी, फ्लिकर का प्रयोग, अल्ट का प्रयोग कर चुके हैं ऑलरेडी, और डैमेज देखिए क्या ही बेहतरीन डैमेज देते हैं। नेतन भैया भी आ चुके हैं, एक्सबॉक्स को जो है यहाँ पे खाली किया गया, उनका शील्ड खाली करते उनको भी खाली किया गया और भेजा गया है सीधा रिस्पॉन्स स्क्रीन पे। और यहाँ पे मेल्टडाउन की तरफ से रिकॉल दिखाते हुए दिखाया गया, टॉन्ट मारा गया उनको कि निकल गए हूं आपके चंगुल से, कुछ नहीं कर पाऊंगे पाओगे आप। और इसी के साथ यहाँ पे मिड लेन पे हमें शायद देखने को मिल सकता है दोबारा से खेती बाड़ी किसी और की, यहाँ पे मेहनत किसी और की, और ये फल किसी और का उठाया जा रहा है। लेके जाएंगे मुंह के सामने से, चुराया गया है सामने सामने, बोल के गए हैं कि लेके जाएंगे भैया, ये देखो ये है तुम्हारा फार्म, ये फार्म करना चाहते हो तुम, ये लो हम लेके गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे रेड बफ पे भी नजर है इनकी, क्या रेड बफ यहाँ पे चुराना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल अंदर जाएंगे, और इसी के साथ कोशिश जरूर रहेगी उनकी कि वो जो रेड बफ है वो भी आ जाए, क्योंकि सामने जब खाना पड़ा हो और आपको अगर दिखे कि भैया खाने में जो है बहुत सारी चीजें पकवान वगैरह हैं सामने सामने, तो आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे, ललचाएंगे जरूर। तो एक बार को ध्यान रखते हुए एलिस नहीं चाहती हैं कि दोबारा से जो पिछले बार की गलती की थी वो दोबारा की जाए। उसे लॉर्ड पे यहाँ पे प्रहार किया जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है यहाँ पे शिव शंभू जी की आराधना। क्या ये लॉर्ड यहाँ पे मिलेगा या फिर अकाई का कुछ हमें देख सकते हैं? कुछ करने की कोशिश जरूर की थी हेड स्पिन यहाँ पे, लेकिन नेता ने सेव किया यहाँ पे अपना और बहुत ही अच्छा एओजी का प्रयोग यहाँ पे पकड़ा गया था मेल्टडाउन को, लेकिन पीछे हट जाएंगे मेल्टडाउन जी, पीछे भागना पड़ेगा। अल्ट का प्रयोग यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया, लेकिन डैमेज देखिए जिस तरह से नितन का पीछे से आ रहा है, खाली कर दिया जाएगा। और कुंफू पांडा जी एक एचपी बचे हैं, अपने कुंफू की तरफ से पीछे जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही गंभीर मामला होता हुआ लॉर्ड जो आ रहा है 3-9 का स्कोर होता हुआ, और इसी के साथ ये जो लॉर्ड आ रहा है अर्ली गेम लॉर्ड है, परंतु ये जो लॉर्ड आएगा इसके साथ ही मेरे को लग रहा है इनविटेड टरेट जो निकालने की जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पे टीम, ये जो अपनी ठीक है भाई। जी जरूर जरूर। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा डैमेज जो है ठीक है भाई प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे। और शिव शंभू जी के साथ जो है पहला स्तर स्तंभ को तोड़ने के लिए अंदर घुस चुके हैं। आइटमाइजेशन हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे उसका, ग्लोरियस पाथवे का सुंदर सा इस्तेमाल शिव शंभू जी के साथ, थोड़ा सा वो जो स्पेस है वो मिलता हुआ यहाँ पर टीम ठीक है भाई ई स्पोर्ट्स को। और वो यहाँ पे दबदबा जो है पहले से मचा रखे थे। जो लाइनअप की बात करूं अगर, तो उनके पास बहुत ज्यादा सस्टेनेबल लाइनअप है, तो आप डिफेंसिव नहीं जा सकते। अब अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे कैरी बहुत अच्छा काम देता है, क्योंकि जो सस्टेनेबल लाइनअप होता है उसको तोड़ने के लिए कैरी ही एक चाबी होती है, बहुत बड़ी चाबी होती है, जो आराम से इस सस्टेनेबल लाइनअप का ताला को जो है वो तोड़ती है, सिर्फ तोड़ती नहीं मरोड़ती भी है और मैच को जकड़ती भी है अपने हाथों में। तो इसी चीज का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ और ठाना था। हैरिथ को लिया था, लेकिन मतलब आउट ऑफ सिलेबस से जो है एलिस आ गई थी, तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ देखिए मिनियंस वेव कितनी अच्छे से लेन मैनेजमेंट यहाँ पे करी जा रही है टीम ठीक है भाई ई स्पोर्ट्स की तरफ से। और पिछले तौर से मैं अगर बोलूं, पिछला जैसे उनका मैच था क्राउन वैल्करी के साथ, वो जो कोऑर्डिनेशन था वैसा ही कुछ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि ये नतान जो है, जो जिसका नाम है नतान लामास पुएर्ते, वो हमेशा कमाल दिखाता है। और साथ ही साथ एओई का यहाँ पे जलवा चलता हुआ किलिंग स्प्री लेते हुए नतान यहाँ पे अल्ट में बहुत ज्यादा डैमेज, और यहाँ पे बम फूटा है, सिसिलियन मर गए हैं, यहाँ पे हेवन को जाना पड़ेगा। एओजी का सुंदर सा प्रयोग लेकिन किसी पे नहीं लगेगा। और साथ ही साथ जो है अंदर घुस के मारने की कोशिश चली, बहुत ही कम एचपी में देखिए यहाँ पर घटोत्कचा को घायल किया है, और डबल किल चुराते हुए एलिस 3 बंदे घायल, साथ ही साथ एक इनिवेटर को ले लिया है। मिनियंस वेव जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बेस को लॉक करेंगे यहाँ पर डीके भाई। नतान जो है बेस को बहुत ज्यादा डैमेज देते हुए, लेकिन यहाँ पर नतान को चारों खाने चित किया है, शट डाउन किया है एलिस ने एक अच्छे से स्टन के साथ। और अभी जो है डीके भाई को पीछे हटना पड़ेगा, पीछे मुड़ना पड़ेगा, यहाँ पे मैच खत्म नहीं होगी और एक शंभू जी को लेना पड़ेगा। ग्लोरियस पाथवे का सुंदर सा इस्तेमाल, फिर ग्लेशियर का और भी सुंदर सा इस्तेमाल, उसी के साथ दोनों को किया है घायल, दोनों को भेजेंगे स्वर्ग के द्वार। और एलिस जाएंगे यहाँ पर चारों खाने चित। कि हाँ कहीं ना कहीं वहां पे हल्का सा हमें गलती देखने मिला, नेतन ने जो है ज्यादा ही टरेट डैमेज खा लिया, और उसी के कारण जो है उनको मृत्यु दंड जो अपनी मेज के द्वारा जो है उनको प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे मृत्यु दंड एक और देखने को हमें मिल रहा है, बहुत ही अच्छा डैमेज, लेकिन एयूजी का प्रयोग करते हुए निकल गए हैं घटों का चा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक एचपी बचे हैं, बिल्कुल बाल बाल बचे, जैसे बोलते हैं ना कि ये जो संजीवनी बूटी है, लगता है वो बूटी जरूर उनके पास है जिसके कारण वो बाल बाल बचे वहां पे। जी जरूर जरूर, वो बूटी उनके पास है, और ये बूटी जो है ये ठमक रही है, अभी ठुमक रही है मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये
यहाँ पे मैच को अपना बना रहे हैं। ठीक है भाई, अगर इस मैच को जीत लेते तो इसके बाद वाला मैच आपको पता है ना शिनरा भाई क्या है, मैच पॉइंट मैच है। डकर ई स्पोर्ट्स को लड़ना पड़ेगा उसके बाद सारे 3 मैचेस, और आपको पता है बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 7 का एक सीन होता है। अगर आप पहला 2-3 मैच हार जाते हो तो आपको आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाती है। अब फिर वापसी करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई और 4 मैच पड़े, उनको जीतना पड़ेगा। और जो टीम 3 लगातार मैच जीती होती है उसकी जो कॉन्फिडेंस होती है वो बहुत हाई होती है। तो उसको पता है कि मुझे बस और एक मैच जीतना है, उसके बाद मुझे फाइनल का टिकट मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ओवर एक्सटेंशन की है डकर स्पोर्ट्स, एक बहुत ही बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे फाइट शुरू हो गया है। देखिए कैसे घूमते घूमते बेब्लेड यूज करते हुए, लेकिन फ्लिजर केशियर को वेस्ट कर देंगे इस ब्लेड के तरीके से। बहुत ही कम एचपी में भागने की कोशिश है, पीछे से बहुत बड़े हमला चलता हुआ, लेकिन यहां पर धाराशायी हो जाएंगे हैरिस। और साथ साथ एक एओजी का सुंदर सा प्रयोग, बहुत ही अंदर मारा है, लेकिन बहुत सारा डैमेज यहां पे देते हुए, यहां पे नतान बैकफायर करते हुए लिया है 2 किल, और साथ ही साथ हाईलॉस को 1 किल मिलेगा। वहां पे चारों खाने चित करते हुए गटोत काचा यहां पर हेवन के टूर में जाएंगे। ट्रिपल किल, क्या एक मैनियक होगा, क्या एक मैनियक होगा? नहीं, एक शटडाउन होगा सिसिलियन की तरफ से। मैनियक लग रहा था, लेकिन ट्रिपल किल के बाद हमें दिखा एक शटडाउन, वो भी सिसिलियन से। और इस मैच को जो है अपने हाथों जकड़ लिया है। मिनियंस को साफ करेंगे, इस बेस को अपना बनाएंगे, इस मैच को अपना बनाएंगे, और एक मैच जीतकर टिकट भी है फाइनल्स का वो चुरा लेंगे। ये मैच विक्ट्री हो रही है टीम, ठीक है भाई स्पोर्ट्स की, कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है भाई स्पोर्ट्स आपको इस जीत के लिए। और बस एक मैच है, आपको जीतना है और फिर फाइनल का जो टिकट आपको लेना है। डकर स्पोर्ट्स आपके लिए अभी दोनों मैच जो है, हर एक मैच 3 मैच आपके लिए डू और डाई मैच है। अगर एक मैच भी हारते हो तो इस टीम से, इस टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाओगे, तो ख्याल रखो उस चीज का। शिनरा भाई ऐसा क्या हुआ? इतना अच्छा लाइनअप था टीम डकर स्पोर्ट्स का, स्टार्टिंग थोड़ी सी गलती हुई थी, उसके बाद जो है एक क्षमा बना लिया था, टर्टल अपने और खींचा था, मैच को अपने और खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी मोमेंट में ऐसा क्या हुआ कि इस मैच पे हाथ धोना पड़ा उन्हें। देखिए, कहीं न कहीं उनका जो लाइनअप था ना बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं न कहीं वो डैमेज जो है कहीं न कहीं वो लैकिंग कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने जो इनिशिएशन हमने देखा स्टार्टिंग में जो किया था वहाँ पे जो बॉटम लेन की साइड पे, जंगल की साइड पे, वहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएशन था अपना बदांग और अपने टैंक अकाई का। लेकिन पीछे से जो डैमेज है कहीं न कहीं वो लैकिंग कर रहा था हर बार, क्योंकि एक्सबॉक्स भी जो है एक एओई डैमेज देता है, ऐसा नहीं कि बस डैमेज दे। तो वो कहीं न कहीं जो डैमेज है वो लैकिंग कर रहा था, और उसी तरफ से जो है जो डैमेज लैक किया वहाँ पे, वो डैमेज के कारण जो है कहीं न कहीं अपनी जो टीम है ये जो डकर ई-स्पोर्ट्स है वो कहीं न कहीं पीछे रही। मौका ज़रूर मिला था उनको जो है कमबैक करने का, लेकिन वो डैमेज की कमी कहीं न कहीं सिसिलियन देखिए जिस तरह से अब हमको पता है कि गेम और लेट जाएगा, सिसिलियन और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। और उनकी साइड दूसरी साइड जो नेतन थे, नेतन का गेम प्ले बहुत ही बेहतरीन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। और लेकिन जो यहाँ पे बहुत ही जो बेहतरीन हमें गेम प्ले दिखाया था वो गटोकाचा ने ज़रूर दिखाया था। पीछे से जो है पकड़ लिया था उनको पीछे से एयूजी का बहुत ही बेहतरीन जो है कमाल, और उसके साथ उनको जो मौका मिला, उनको जो रोका गया कि वापिस बेस पे नहीं जाने देंगे, आपको वहीं रोक दिया जाएगा, और पीछे से नेतन आए, नेतन ने जो खाली कर दिया पीछे से। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले। तो यही जो मैं कह रहा था आपको कि कहीं न कहीं जो है वो डैमेज की कमी रह गई, क्योंकि मेल्टडाउन भी जो थे अपने वो भी टैंक बिल पे थे, और अपने जो अकाई है वो भी टैंक बिल पे हैं, और अपने जो एक्सबॉग उनका एयूजी डैमेज आता है कहीं न कहीं, और जो अपनी मेज है अरोरा, वो तो जो है ज़्यादातर क्राउड कंट्रोल के लिए, डैमेज इतना नहीं जाता उनका। तो जो बैकलेन से डैमेज देने के लिए सिर्फ़ एक ही थे, वो हैरिथ थे, और हैरिथ ने दिया भी डैमेज, और लेकिन वो कहीं न कहीं वो पर्याप्त डैमेज नहीं था। जी जरूर, और अभी जो है तीसरा मैच बहुत जल्द आरंभ होने वाला है। क्या होगा, क्या ठीक है भाई इस तीसरे मैच को अपना बना के पूरा क्लीन स्वीप करेगी, या फिर यहाँ पे दिखेगा हमें डकर ई स्पोर्ट्स का जलवा, वो वापसी कर पाएंगे? इसको जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। इस बैटल ऑफ एंस इन सीजन 1 पे हमारे चैनल रियू का एमएल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, शेयर कर दीजिए स्ट्रीम को अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट पे बताइए क्या होगा, क्या ठीक है भाई क्लीन स्वीप करेगी, या फिर हमें दिखेगा कि वापसी, एक कमबैक, वो भी डकर स्पोर्ट्स की तरफ से। और उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत खुशी हुई आप सब यहाँ पे आ रहे हैं, हर दिन इस मैच को देख रहे हैं, मनोरंजन को और भी ज्यादा मतलब प्रफुल्लित तरीके से जो है बढ़ा रहे हैं। उसी के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर लविंग अस। और कुछ देर में हम लोग आते हैं। Yeah. Everybody
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright.
I'm alone, I'm alright. It's so cold. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. I'm alone. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.
Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Ladies and gentlemen, welcome back to the Battle of Ancient. And as you know, we are kicking off the semi-finals, and this is gonna be the second match of the night. And man, oh man, the first watch was already a banger. So currently, we are back with the second match, and in this series, we'll be seeing Team Best or Bust taking on against Team Armageddon. So currently on the caster deck, I'm gonna be Shinryu, and I'm joined by Miss Lovely, the only one and only who's gonna add color to this game, which is gonna be Miss Debbie. So, Debbie, if you're out there, bring it out. Bring out the energy for this game. I'm very interested in two of these teams because I'm very familiar with these two teams. Armageddon Esports, they have risen from being tapis and being a champion right in an offline tournament in a community. And then for best or bust, they have been rising in FPS so far, and this tournament they are fairly made new. So the band is going to be very interesting. So we have to see for best or bust. They ban out the Harriet and the Matilda, a fairly easy composition, I would say, because these two heroes have been such a nuisance. They do not want to give Ito the Harriet too. But it's interesting for Armageddon. They ban out the Fanny and the Badang. Is that a Badang? Okay, they are banning out the Badang. So it's kind of interesting, right? When you have a Badang, you do not want to give it out because you want to have an assassin player into your side having the time of their life. Yeah, I mean, they are just banning out the Badang for the potential of getting flexed around, and I don't blame you for calling them bust or bust, because I did that in front of, I don't know, maybe 4,000 people on Hoon stream. So yeah, call me out if you want to, but yeah, I did that. So anyway, back to the topic. The bans, you can see they are banning out pretty standard heroes, which we are pretty used to seeing, in the banning section so far. Again, the Zushin will be the final ban. I think nothing too surprising yet, except for the fact that they have a lot of heroes to pick for both the sides, and first pick is in the hand of Team Bust or Bust. They might go for something of a flex potential. What do you think? Oh, a flex potential is what's needed because right now, okay, the Suyo, they went directly for the Suyo. So maybe this is a denial pick for the side of Megaton Esports because Charlie Brown is so amazing on those assassins, and they just want to bring it out the block potential. But then again, there's a choice for the Hayabusa too, right? The Hayabusa has been such a phenomenal hero to use into the jungle.
But like you asked, if they are gonna go for a flex pick here, so the flex pick Hylos might good choice. Okay, Bronze Boy, he hurt us, and he's gonna be locking onto that Hylos. But then again, where will this Hylos go? So it's kind of a choice or a best or bust to go for the CC here, but will it be so early? I understand the Irithel here because Irithel against a Granger Granger. is a Mm-hmm. simple story. Yeah, lane. Time and time again, they'll be sorting it out. But the late game might definitely for Irithel is gonna be good. But for Granger, the mid game is gonna be signing. And if he snowballs, there's no coming back from that. So let's say, what would Hey. B2B go for here? Okay, Oh, the okay. I think that caught both of us by surprise. That is three strong heroes early on without any kind of flex heroes. Team Best or Burst are going at it with the damage oh, potential heroes. But once again, this is going to be a best of three series. So both of the teams have time to adapt. And like you were talking about, the Hayabusa side will be locked in from their side. But again, the point with Hayabusa is that he needs that early game snowball where he can actually get a mhm. good item lead as well as a goal lead where he can just get those heroes locked in from the backline. So once again, you can see, like for mentioning, I mean, every hero you mention is either getting banned or picked at this point. Oh, So I okay. don't know, Devi. So once again, the CC will be banned. They are just fearing that it could have been used in the EXP lane for countering out that Hylos, like you mentioned. So what is the next ban you think will be coming? The ban, okay. I mean, okay, the mix does make sense because therefore Armageddon Esports they still have the Hylos who is still afflicted, so they do not want to ban out the Roam and pull out the potential that they can give out Ryota his glory again. So very understandable for B2B here, but the Tiger is definitely being banned, gonna be banned by AE here. So I understand this because we all know that Tiger is so amazing against any heroes, any assassin heroes, such a nuisance as well. But right now I like the CC ban for Armageddon here because, like you said, CC versus a Hylos not a good choice for Hylos. The early game is surely gonna be lacking for the Hylos when a Hylos is a hero that wants to join any kind of team fight and be the setup or initiator or a savior above all of that things. But the ban still, they can just normalize banning out the mates here again. I do not know which one they want to go for here because still, Selena. I mean, so they ban out the Selena or they wanna, not overthink. Okay, Farsa, there we go. That's my side better. Hey, the Farsa does make sense here, Deb. They just want to give away Yeah, that, take away that like long distance zoning heroes, which can just give like which can have a very good objective control. The Farsa does really well, and I think even Eve mm-hmm. was a potential hero that could have been banned here. So either of them is fine, but again, this does open up the Novaria, which is a really good hero along with that Grandeur. It can work well, but Heavy. Wait a minute, they just picked up Selena, like you mentioned. What is Okay, happening today? okay. I don't know. Oh, Like maybe we should just get a lottery at this point. Like, yeah, you can just predict the future at this point. But again, yeah, I think this is a really troublesome hero to go against if you're a late game hero. That early game Prince is looking so strong with that three picks alone. The Hylos, the Hayabusa, as well as the Selena, the zoning as well as the mobility from these heroes are so great. And how will they cancel that dive, you think? that's crazy. It's gonna be if they took out the phobias against a Hylos. I'm not the best fan. I'm not the I do not like the phobias and the Hylos brawling out together. On top of that, a Gatot too. They can have tons either way, but then it's limited, right? The heroes are limited when you want to go for the picks. So the Gatot and the phobias are the only option here. So the Hylos can go into the XP, but still, we have a Lucas up there for Megaton. They can go for the Lucas too, or maybe put out these Hylos into the room and they can go for Oh, that too, but then again, they can have to go for this Franco. So this is a very different kind of non-standard, not normal anyway. So therefore, and maybe he wants to go for this bloody hand, trying to go out for the backlines, and then he wants to be a troublesome hero for the Surya. So this is it's kind of a big potential for Armageddon here because they have such annoying heroes with the range. Yeah, they have the better high ground, but then again, the late game is better for best or bust here. yes, they just need to stall that early game. But again, what does that do? They have forced that Cecilia to wait.
he was on a purify, but he just went for the flicker. So Oh, I don't know if this is the right choice. I just saw him. Oh, it was purify, but it's right now it is flicker. So I think those iron hook as well as the abyssal arrows can be troublesome. Projectiles to deal with for the Sicilian if he does not have that purify. yeah. But again, the spells are very different from what I saw in the drafting phase. Even the Phobius was on a vengeance, and right now he's on a flicker. Oh, So I don't know. Maybe I'm lacking or something, but that just beats my eyes. But at this point, I just like both the teams are going for that revitalize for that extended team fights. But back in the land of dawn, we go for the first game in this best of three series between Team Best or Bust. oh, Sorry, my bad. Team Best or Bust versus Team Armageddon, taking up against each other for the semi-final. To get to that final slot. So this is going to be an interesting matchup as both the teams are more than ready. Both the teams have a lot of prior experience, like Debbie mentioned. She has a lot of info on this team. So let's see how will they fare as we are going in the land of dawn. And both of them are going for the standard rotation. Maybe to the goal lane they will go. oh, the goalie is definitely gonna be focused by Armageddon here because they want to farm up Ito, right? He's a hero that needs a lot of snowball potential, and like on paper also, Irithel is gonna be having a good time. But look at that, there's something here, Sinjo. Ooh, you can see the Sagwin God class is connecting, and the first bird will be torn by Team Best or Bust. They are starting off strong, even with that lead game kind of drop. But man, oh man, that was an aggressive start. If you ask me, the Frank was still there, taking a bit of taunt, but he should be okay. It has already used the flicker, but the blue buff. Look at that invade coming in, forced to use the Okay. retribution, but the stun does connect, and there is that iron hook, but the kill will be going to Ryota, and that will be a kill going in the hands of Team Armageddon as they are still trying to find more. The Sanguine Claws will just connect, but I don't think so. They might go for another engage here. Oh, it's already the early game, but then Ooh. the little. Oh, look at that. The forcing of those kills as well as that will not even help him survive as there is another kill in the hands of Team Armageddon, just getting back at the aggression at this point. Oh, that was a good and fast rotation coming out from Bronze Boy here onto that Highlands, and I would say he doesn't try to make try to make plays like an XP laner should. He's just trying to give out the vision and soak out the damage as well. But then again, I would say one kill onto Ito by Best or Bust might eventually be having their ASL say round farm up as much as possible. But then again, it's still very early on. The first turtle might be onto the focus here. This is the first objective of this game, and whoever get this turtle will have the chance to have that snowball going on for them. But still, there are chances for Armageddon to have a mid game here. The early game is security is into the hands of the big PP guy, the Suil. So if he Mhm. have the chance to take this on his hands, he might eventually have the chance to be comfortable in the Oh, experience. And oh, okay. look at that iron hook as well as the bloody hunt connecting, and Phoebus will be just still getting deleted, and so is Ken Sato. There is that glorious pathway just to zone the member out, and you can see that it is forcing out that revitalize as well as the glorious pathway just to get some more HP on that Hylos. But this turtle should be in the hands of Team Armageddon as they are, utilizing that early game so far. This is good. This is a good situation for Armageddon to be in right now. If they have a kill, if they have the turtle here, they're gonna be giving out the lost goals to Ito here, to Ito onto that Granzer. Again, this is gonna be a great start for them right now. So Sarang here, he has to play it cool, he has to chill down a little bit and just try to look for some kind of, uh gold and final gameplays. But then again, the goal is really onto the focus here. But look at that, Charlie Brown. Ooh, the Ogi Shadow Kill will take down the big baby guy, but again, there's that Oh my AOG, god. nobody home, and he will get just taken down. There is that glorious pathway just to zone out the member, and it's not in a good spot, taking a lot of damage, does not have that sprint to get out of the harm's way, but there is more aggression coming, there is a retribution just to Oh, get a bit more advantage, but not really enough as that Cecilian will still survive. 7-7 is just on the run from that Hylos, but this bot lane turret gold will be taken down by Team Armageddon at this point. yeah, Team Armageddon Esports, they have their sights right. They know what to go for here, and it's only under 4 minutes, and the goal plating have been a chunk down quite low, and then the turret might be onto the focus here again. But then, oh, look at that! Oh my goodness, the iron hook with the bloody hunter will be the shot caller here. Siren will fall down again in this team fight, and the turret will be taken down by Armageddon Esports. Look, they're looking for more.
They maybe they go for something out here, but it's just a deny onto the creep to turn around onto that goal lead as much as possible. And I feel like if they have the map control, oh look at that, look at that. Oh, you can see he's going in Hayabusa with that skills, but not nearly getting the damage. But again, that is wait. There is just fun going on with that blue buff getting pulled, but that will be the buff stolen. You can see not the blue buff, but the orange buff will get stolen by the grandeur, but there is that stun connecting on to the big PP guy, but I don't think so there will be a follow-up, but that is an instant lock incoming. Oh, look at those stuns! What is happening? Those are like instant lock here, Devi. But again, with the second turtle coming up, I think Team Armageddon are good to take this as they're just bursting it down with the damage of the Selena as well as the Hayabusa. And that will just further their lead already at a 4K, ahead of their counterparts. This will give them a lot of items as you see it on the screen. The item spike is already here. This is all. This is great. This is great for Ito here onto that Grandeur. He's already got that Sky Piercer into the second item and it's gonna be taking up. And if he gets the kill, it will be hard for the side of Team Best or Bust to take him down because he's got a lot of protection from the Franco from Hylos, and there's always gonna be that. Oh, look at the dive. Hey, another skirmish taking place. The glorious path we already used is, as you can see, the stun does connect and the members are just too low. The backline, the Cillian trying to go in for the dive will get bursted down from the damage of the rest of the member. The Hayabusa going for the flank, taking a lot of damage, but still survives by a sliver of HP. Too close for comfort as the rest of the member just getting out of the harm's way. They do not want to just overextend this team fight unless they want to go in for the mid lane push. As you can see, that 1v1 between the Phobius as well as the Hylos, not really going for the engage as the mid lane will get cleared at right time. I would say it was a big rotation coming out from Armageddon Esports. They are already in a 5K goal lead, and then I feel like Best of Buzz, they have to be careful a little bit, even though they are trying to farm up the Irisel as much as possible. It's another good decision coming out from them to rotate the Irisel so early on into this lane. But then again, Ito, he's still not behind. He's just farming out time and time again, looking for kills and joining the team fights. Meanwhile, for Irisel, he's been stuck in lane, just looking for that late game power spike. But it can be too late because Armageddon, they are everywhere at this point. They are giving so much damage, but look at that. Ooh, the triple stuns, I would say at this point. It's just getting everybody by surprise as there's another Abyssal arrow connecting and the bloody hand will be there, but double kill will be secured by Ito as that Gatotkacha's AOG just was used for a suicidal move as he will also get taken down. The Iron Hook does not connect onto the big PP guy as he's just trying to clear the mid lane, but there's the Hayabusa going in with a shadow as well as Ogi shadow kill, dealing the damage, and that will be a wipe out coming in from the side of Team Best or Bust and Team Armageddon. They are so strong in this game. Look at that lead. The last turtle is also being taken down by their hyper Charlie Brown, just making sure they get all the neutral objective in this game. I would say it's a cute name. Charlie Brown is a cute name, but he hasn't been that much. He has been a monster in this game with the dive. Always with the right target. I would say he's always been perfectly on time, and then they were, calling all the shots. They are pulling the triggers. They are shooting all the shots, still gunning down every member for the side of Team Best or Bust. And you know what? The pressure coming out from Franco, Selena, and Grandeur is too much for the side of Best or Bust to handle. Because look at that, they can't be any kind of push. Look at that, another bloody hook. I mean, it is just going on as we'll also getting busted down. You can see that Phobius has to force to use that flicker to get out of the harms. He was trying to find a play, but there is that rotation from the rest of the member, the Iron Hook as well as the Bloody Hunt. I mean, I call it the deadly hunt at this point, like both is like instant lock at this point. So, I mean, the stun as well as the Hylos going in, giving that vision. Oh, look at that. Another stun, another hook connecting, and the Cecilia. Oh my goodness, Ito with the snipe, getting that kill. Man is so ahead. That one snipe, that one lock. Oh, another hook, and godlike by Ito. Man, that is just a cheating coming in from the side of Team Armageddon. They are just like, hey, you connect the stun, I'll hook, but that will be a hook missing. But this time again, that Irithil is kind of isolated on 1v1. I think, that Bronze Boy won't be going in, otherwise he will be getting a bronze on that hero. But look at that off-cam kill. I think the Charlie Brown not being cute anymore, like you were mentioning, going in aggressive, getting another kill. Once again, furthering their lead, and Team Best or Bust
they are not having a good time in this game. They are so behind, as well as they are losing that objective control in this game, Debbie. Yeah, they are like a mobster, right? They are like a mobster, not leaving any kind of goal, just stealing it away time and time again. And no, they are not even giving it to any of the team of the side of best or bust. They are just taking it all by themselves, and even the hooks landing perfectly with the arrows, with the death sonatas, that final cold. And when you thought it was ending, at the end, Charlie Brown will dive in again. Oh my goodness, this is too much for best or bust. What they can do right now is do the housekeeping, just try to farm up into your own base. But then again, it's still hard because look at the minions. They are being freezed in the lanes, and there's no way they will be able to farm up because whenever whoever goes out, you're gonna be getting punished time and time again because the hook is there, the stuns are there, and the deadly artillery is also there. So maybe they will be that's their only chance to do that. But it will be Mhm. so hard. The only thing they can do now is try to play for that macro thing, right? Both of the teams cannot go. Both of the players cannot go. Only one person at a time will be able to do so because look at the macro decision coming out from Armageddon. They are denying everything. They are not giving everything away. They just want to, keep their goal lead in the perfect position or maybe keep it higher. So this is what they are doing. But look at that. There's a dive. Oh, you can see that flicker being forced from the Sicilian won't have it on time when the Lord will get pushed in. But like you were mentioning, the denial is at point. They are not even letting them get their own jungle. You just saw that Ito picked up that BOD, and that is just gonna give even more power spike to him. And the Selena is just having a bit of connection issue, I believe, at this point. I don't know what's going on, but it's a 4v5 at this stage. And with the Lord, it is a 5v5. Let's not Oh, be biased. But again, that Iron yeah. Hook is there, always on point, and you can see that mid lane turret will be getting taken down. They do clear out the Lord, but the rest of the members are a bit hesitant going in a 4v5 situation. But there is another Iron Hook, as well as the Bloody Hunt connecting on to that. Gatot Kacha will be forced to get taken down, but there is that clap back from the side of Team Best or Bust, but they are not having the damage necessary as that 4vs will be getting bursted down. Two members there already taken Oh, down as Hayabusa going in with the shadow kill and will be getting another kill. A double kill will be secured by him as it is a 3v2 situation. Ryota finally back on map, but Team Best or Bust not really looking good as they are losing that capability to just frontlining heroes as the stun won't connect. And you can see the minions marching down, and Ken Sato will be finally back. I think they might be able to defend with the members being back on map here, Debbie. yeah, but the torture is definitely gonna be done by Ryota here. It's gonna be, stunning onto the abyssal arrow time and time again, not letting them out. And I would say the requirement for equipment has been so much for Seirang onto the Irithel. He does need those, magic blades in order to survive any kind of magic damage with the seal. And he also gonna be needing that wind charm, that wind of nature in order to survive that Seto kill too. But he's so behind. What can they possibly do here? The only win condition I see is for say Rang and Seven to farm up, but then they are all denied all the farms and their equipments, their items are not much in comparison to Team AE. Oh, you can see another skirmish taking place as the big PP guy will be not in a good spot taken down, and there's the backline dive from that Grandeur this time around. The AOG used defensively will connect onto one member, but you Oh can my see there god. might be a wipe out, a triple kill by Ito to get this game in the favor as Team Armageddon will be breaking the defenses of Team Best or Bust as they are busting them out in the first game in the semi-final best of three. Best of three. Debbie, that was a banger from their side. The scoreboard speaks for itself. Don't you agree? Yeah, this is a perfect score, I would say, and perfect dominance. I mean, it's Mm-hmm. so showy. They are so sparkly, right? For Armageddon, they are using those stylish hero like the Hayabusa, a Selena, and a Granger. So they are showing the dominance. They are showing the picks that they could work for, and even though for best or bust, they have an early game security with the studio, and the dive into the early game where he wasn't aware that the team of Armageddon were close by, and he got caught in the midst of it all and got stunned with the abyssal arrow by Ryota might eventually be their downfall because you do not want to die that early on a hero like Suya, who does need a lot of farm into this early stages of this game. You want to be available all the time, but then you do not want to fall down that early on in comparison when you are going against a Hayabusa.
So it kind of, throw down a little bit, and they came to a position where Armageddon can, file around the map. They can go anywhere they want, and they will be going back without being punished. And that's where the goal lead keep on coming for Armageddon Esports, and they managed to secure every kind of neutral objective, and then the goal, the damage were too much for best of us to handle. The fact that the synergy was so on point really speaks how good the team can walk around with their picks. As you can, like we're mentioning, Ito, when he was so ahead in the game, he just made sure that farm was not wasted onto him, and he was constantly giving that damage to the rest of the member. That abyssal arrow as well as the bloody hunt. Every time it was connecting, and the member were just getting, not getting safe out of it, like with sliver of HP. That ultimate from the grandeur was constantly there, and he made sure that nobody survives the onslaught. And man, Charlie Brown, like you're mentioning, might seem a cute guy, but to me he was like a deadly assassin with that Hayabusa onto his hand, and he made sure the flanks was on point, as he was every time getting the right members. I think they are so well equipped with their skills as well as the micro of the game. You also mentioned it in the game, so this time around they need to just work with it more. But Team Best or Bust have a mountain to climb. At this point, they need to just get a lot of things to work out. They need to just build a different strategy, because it was really hard for them to come back. So they might have to find a alternative way. What do you say? Yeah. I've been saying in the draft too, right? That going against a Hylas using a Phobias and a Gatot is not it for me, because it comes down to micro. The Hylas is gonna be slowing you down, and when you're constantly gonna be needing the rage onto that Gatot Kata, and he's not gonna be giving that when you the basic attack dependent heroes, even if it's a fighter, he does activate that rage too with that Gatot Kata, as well as the Hylas with the procs. So when the not the Hylos, I mean the Phobias with the procs. So when there's a high loss into the other side, he's gonna be slowing you down. It's not that they were not really relevant in this game. Meanwhile, other drafts, I'm fine with it, but they should have worked on those, tanky sustain heroes that they had. I mean, those two picks was kind of forced, like you mentioned, the Phobius as well as the Gadut Kacha. They kind of had a hard time just to get against with those the dive, as well as the front line was just getting melted every time. The iron hook as well as the bloody hunt, like I was mentioning, the deadly hunt that was always there from the side of Team Armageddon, constantly made sure that they could not get anything on the map. So I think this time around they need to just find some alternative ways to just walk around with the different heroes. I guess they should not be forced into heroes which they are not comfortable with. So again, let's see what will they do. So with that, I think we have to go for a short break to let the teams just get ready for the next match, and we'll also be back with some more energetic match that will be on our way. So don't go anywhere, guys. Just stay tuned. We'll be back after a very short break. So see you guys soon. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. Hey, if you haven't found a man of his word, then welcome. Meet me and Debbie, because we are the people of our words. We are back with a short break, very short break, like I was mentioning this time around. This will be the second game in this best of 3 series between Team Armageddon on the blue side this time and Team Best or Bust on the red side. And from the last game, we saw Team Armageddon are already ahead. They are at a match point. So, Debbie, what is that mountain that they need to climb? Would you like to reiterate that for the rest of the viewers who just joined in? Oh, yeah, Armageddon is a big fat mountain. So high of an obstacle for best or bust to climb, because the sheer dominance that they saw into that game one has to be putting, best or bust in a position where their mental is kind of messed up, that they want to ban out the heroes that they have been facing. But right now, still you have to go for the standard bench first, right? So yeah, the Selena will be appearing here for Realtor. I feel like this Selena was the early game damage hacker, right? 2 months of a stun.
they weren't able to work around with the Selena so far. So I feel like best of us, they are understanding the situation. They know that they had to ban out the Selena as they want to go for the early game hero. So the Hyla's still appearing. The Fanny is always going to be up. But for the side of Armageddon, they still stick with their original plan because the Matilda, Badang, and Azusin is a must-win hero in this meta. So the first pick is still out there. The Granger is also there. But then again, for real, for Ito, the Herald is also there. But okay, so we are gonna be seeing a Suyo first pick another round to this onto this second match. Hey, I think we just need to change the meta for India because right now I see a lot of Shuyu getting picked as the first hero, you know. Gone Yeah. are those days where Grandeur as well as the Irithel and the Harith were the first pick for a lot of teams, and time and again I think with the buffs and the nerfs with a lot of heroes, the meta has been shifting and we are kind of witnessing at this point. So again, I don't also one more thing, I don't believe if the girlfriend buff is real or not, but there is a person on the live chat named Jenny who's supporting her boyfriend. So yeah, kudos to you guys. You're doing very well. I think it is for Yeah, Team me Armageddon. So too. yeah, the girlfriend buff is actually working, guys. So kudos to you It's guys. So totally gonna yeah, you be guys are cute. Armageddon. Yeah, you guys are cute. But again, back to the draft we go. This time around, the Harith as well as the CC will be getting picked. Both the heroes were banned in the last game, so I think Team Yeah. Best or Burst they realized that they need something different. You know, the different approach that we were talking about that is coming through, and there is the joy. I think probably to Okay. the EXP lane. Maybe. What do you think? I don't. The mid lane can also be a possibility because Armageddon Esports they have a thing with them when they are going for best of threes or best of five. They usually try to experiment a little bit into the second game where they have a game into their hand, one game into their hand, and they try to make it work too. So there are different kind of composition that they go for, but it's kind of unpredictable at this point because the throw is still popping up. Still can go into the XP, can go into the roam. So I personally like a throw into the room position, but then again, we never know what they're gonna be going for because a throw against the CC is what I would go for if I was in a play. Because throw can outclear the CC and try to rotate as fast as possible, or maybe he can go into the XP right there and try to pick up something of a sustainable roam or two. But then again, for this is an exchange of hero here. Suyo they take it away, but the Hayabusa is going to be taken by the big PP guy. Maybe he can work around here. Because then I've seen this guy onto the assassin is so amazing on the link as well, so the Hayabusa might eventually be his comfort too. So there's no kind of flexibility for best or bust right here because they are I having their I best understand the struggle. I understand the yeah the struggle, Debbie. struggle right. POP. Yeah, Yeah. I have a PTSD, you know, for that name because Okay. I did that in front of 4,000 people. So I'm gonna keep on mentioning that, guys. Don't mind me. But again, this time Yeah. around, you can see that the heroes are getting a shuffle a little bit. But I would say one thing, Team Armageddon, they are really favoring those, you know, single target heroes that the on Yeah. the roaming position at least. Last game it was the Franco, and this time around it's the Chow. So they are really focusing on one hero at one time. I think that is the playstyle that they have, and with a joy, kind of understandable. It can mark the backline, and the Shuyo most probably would be going to that, you know, the jungle position because his clearance is pretty fast, whereas the joy can be flexed around a little bit. But this time they're banning those tanky heroes and team Bester Burst. They are banning out that, you know, marksmans, which can be a potential Oh. target for a potential threat for that Harith to come online, but they have left open a lot of other heroes which can kind of be a problem as well. And I think the Phobius is one of them. You know, they should have banned the Phobius if they're going in for so many dive heroes, though they have that CC, but you know, if the CC is not present in this team fight, the Phobius can be a really big threat for team Best or Bust. Yeah, when we talk about the CC, I mean, when we talk about the team fights, FO is definitely going to be having that good time, and especially when going against a CC, I would like the Fovey is better than any other thinking heroes, sustainable heroes too. But I'm not sure why the best or bust ban out the Beatrix here. Maybe they know something that we don't. Maybe Ito have shown them a Beatrix, a sick and mean Beatrix that he can go for, but then they're opening out the carry to okay, a carry here against a Harris. It's kind of genius, I would say, a very genius Harris. When you lane against a Harris, kind of like the Mhm. carry much better than the Granger. But yeah, the Granger they have to completely ignore it. So yeah, still the Hey, Vexana also, piece is you a know, it's worse. also a classic counter, you know, Debbie, the Harith and Mm, the and the carry pick. Carry. So talking Yeah. about the Vexana, yes, go on.
yeah, we were talking the Vexana. I feel like Vexana is good against tanky heroes like that can frontline like the Garfolds, like the Hylos. Hmm. So for Bronze Boy for Armageddon, they pick up the edits that the Vexana cannot do anything to. It's like there's so many response, always a response for Armageddon. So the mid kind of pick might eventually be a fail for best or bust. So they need to have a tanky frontliner here that can protect your Vexana time and time again if there's gonna be a Cho who's gonna be, always targeting you. And if a Vexana is on Purify, his Dasu is gonna be having a field day against her too. So yeah, they need a very tanky frontliners. What are the options? I'm not sure. Ooh, Okay. wait, the chip. Oh, Hmm. shit. I mean, personally, for the CC, she cannot tank too much damage, but she has a decent, sustainability. But again, the Mm, chip is one of the heroes which would much more engage the team fights, much more, the heroes which gives a lot of zoning potential than take damage, I would say personally. But I don't know if that's a good choice in this game. They needed a good frontline who can engage as well as yeah. sustain the damage. But the chip does fill up the spot where it can engage the team fights. But talking Mm. about the damage, the sustainability, a bit question mark. But again, it is what it is at this point. Both the teams have locked in their draft, and this is going to be the second game in this best of three series. Team Armageddon already having that match point in their hands, and like Debbie mentioned, they like to go for that experimentation with their draft. And this time around, that mid lane Joy is one of those heroes which we can see will be popping off in this game. So let's see how will Ito perform. Last game he was phenomenal on that hero, and so was Charlie Brown, the cutie boy, like Debbie mentioned, was not so cute, but a deadly assassin this time around has his hand on the Shuyu. So it's gonna be really interesting as we will be moving in the land of Dawn to find the answers to our questions real soon. And guys, if you haven't subscribed, liked, and shared the stream, do it right now because this is such an interesting match. We both know these teams have it all because they have reached the semi-final of this tournament and they are fighting for that last slot in the final position where they will meet their counterpart who is already waiting for them. But back in the match we go in this amazing game. So Debbie, let's just break the game down for our viewers, isn't it? Yeah, we have to because a very exciting mid lane. I would say that Joy is going to be playing far better than a Vexana, like we have known. But Vexana is also known for the clearance, right, with the Chorus Blast, and she's gonna, the mid priority is definitely going to be what we have to look out for. But then again, for Armageddon Esports, I don't feel like they have an insert for any kind of shortcuts combination. But look at that! Oh, what is Ooh, this? man, that's an early kill coming in from the side of Team Best or Burst this time around, Debbie. Hmm. Okay, this is what the starting is gonna be looking like here at this point, and I would say there was a Mhm. bit jealousness coming out from J4 onto that show. Maybe he's just too excited, like any other Toe user. So it's gonna be exciting, but yeah, Kensato definitely gonna be focusing onto the goal in this time around because they want to have this Harris available as early as possible. They want him into the team fights. They want him in a position where they can go try to look for flanks. But then again, the mirror is out. Hey, you can see that rotation coming in, and the flicker will be saving him out from that harms with a carry to really aware of his surrounding and perfectly played flicker. I would say the Oge Shadow kill was cancelled out because of that. So that early dive from that early in the first minute of the game is kind of feeling, but as you can see that Team Armageddon are trying to go for a clap back. They are trying to find and engage, but failing to do so. But the Vexan is kind of solo. Hey, what are you doing there? Wakey, wakey. The rest of the members are rotating back. And the first turtle of the game will be spawning soon. So both of the teams are trying to make their way. As you can see, the Joy is going in. The Hayabus are just trying to poke a little bit, but the turtle dance will begin soon. Yeah, this is gonna be it for the side of Team Armageddon Esports. But then again, they have a chip who can rotate out with the portal too. But yeah, the freeze coming off from Ito here is gonna be perfectly on point because he's gonna be denying saving another minions. Yeah, this first hurdle is gonna be focused by only three of the members. As Charlie Brown will be securing it. That is like turtle being secured, but you can see the Hayabusa not in a good spot. But the taunt will be Oh, there from the Vexana, but there is the damage onto him, and he'll be getting taken down as the CC forced to use the vengeance, still surviving. But that Shuyo is really surviving on a sliver of HP. Needs to be careful. Not as Shuyo, it was the edit, but there's the dive coming in. The 7-7 as well as Kansato will be getting two shut down. As on the top lane, there was a 2v1, and I think that was a good night for that
Harith. So this is really back and forth, Debbie. Yeah, it's going back and forth, and this is the type of competition you want when you have this kind of heroes into your kit as well. But then a good response coming up from Seven onto that, like Sanas is trying to stay in the blue buff as long as possible. He did take out the blue and denying it as well, and even securing 2 kills onto his hands because with the Cursed Plus, it's gonna be distributing the amount of explosion too. So look at that, the position on J4 might be looking for something. Ooh, the way of the dragon does connect, and Big PP guy would be getting taken down, and that is a bad news for the side of team Best or Burst, as their jungler will be getting taken down. That is twice in a row, and that is a flicker force out of the glue, and that Harith not in a good spot. That Shaw trying to go in for the turret dive, taking a lot of turret damage to just give the rest of the member a bit advantage, but there is a Zaman force being dropped down as he's trying to defend his lane against 4 members. There's the Whoa. Vexana taking a lot of damage, but there's more rotation coming in. The Hayabusa finally back on the map, will be getting taking down that the Shuyo, right? So there's the Yep. rest of the members trying to go for the clapback as 2 members will be falling for one. And I think the shortcut was perfectly placed. That gave so much advantage for the side of team Best or Burst right now. Yeah, I would say it was a very good response coming out from Best of Boss with that chip, and they know what they are doing, right? They know that they are faster in the rotation completely in comparison to the throw with the chip. So, oh, look at that, there might be a damage. Ooh, the Salmon Force. The way of the dragon won't be won't be saving him because that is another kill secured, and that's not a person you want to give the kills to. The Harith will be getting that Yeah. early game spikes, but there is the knockup does connect, but he'll be saved by that Kensato's ship as the Primal Wrath is forced. The turtle dances already there as Carly Brown will be getting that retribution on that turtle, but there is that you can see that beats coming in from the Joy will be taken down, that CC, and there is another kill by Charlie Brown onto that chip as that Hayabusa is just forced to under his turret by 3 members and he's trying to recall, but there is that dive coming in from Charlie Brown and the big PP guy not in a good spot. Oh, You can see there is that oh, this is just too much of a bullying coming in from the side of Team Armageddon, and they will be successfully taking him down. No, help oh. from his team. They're too far away. The Eternal Guard is there, but I don't think so. That will be saving 7-7 as he also falls right short after. Yeah, I feel like there was an immature play coming out from Seven until the Eternal got maybe he should have waited, but I feel like he was also anticipating that they would be there, just trying to look for him. And I would say it was a waste of resources. What can they do here? Because there was so many chaotic plays coming out from Armageddon. They were going everywhere. This is gonna be hard because there's a hero like a dive hero like the Suyo and the Joy onto one team. One is just enough, but they have two, so it's gonna be hard for the Vexana to be seen even around them, and he has to be tower hugging because there's a lack of protection coming out from the chip too. Because you know what, like we have all know, chip is played independently with the portals, but look at the position of J4. He's looking for something. Hey, that knockup will not connect as the ship shortcut is already used. The rest of the members will be making the way, but it's too late as Ken Sato will be falling. He did have the flicker, but there's a lock on. You can see the Eternal Guard knocking up members from the side of team Oh, Armageddon as they will get that top lane turret, but they are being a bit hesitant to continue that fight. But onto the mid lane, there is that you can see the Joy a bit low, trying to get the recall, but the blue buff, not the blue, the orange buff will be taken away by the side of Team Armageddon as they're just forcing their way inside the jungles as well as the turrets of Team Best or Bust. Looking at the mid lane, I think they are trying to look for another fight. The force flicker from Kensato won't be saving him as there's the Primal Wrath dealing that enough blow. You can see the Chow taking a lot of damage but still trying to run. He's being chased, but not for too long. As there is a dive coming in, as on the oh. off cam, there's Ito with the kill onto that Sering. As Team Armageddon still so strong in this game, making sure that everybody's in check and getting taken down here, baby. Yeah, this is just too much for Ken. I mean, not Ken Sato, but Best of Us to handle because this is so much of a chaotic team fight coming out of Armageddon Esports. Time and time again, they are going in wherever they go. They are just diving in. And when we thought that they were going for a team fight, there's another kill onto another site. All the lanes are being bullied, I would say, because there's always a dive. Whoever the hero is, there's always gonna be a dive competition from them because Joy, the Totu, and the Seal, it's gonna be so dangerous for the Vexana. Even the Harriet too with the flicker, he doesn't have the purifier to save him from the way of the dragon. So whenever there's gonna be a kick committed onto him, it's always gonna be there.
there's going to be a sure kill too. So yeah, we have to see what they're going to be going for here. A 3v1 is not looking good as that TC will be getting taken down, and there's another kill on the side of Team Armageddon and make it 3 as they take down Ken Sato once again, not having a good game. That Harith as well as the Chip, they were forced to use those heroes, and it's not really working well, like we were talking in the draft. But there is a knockup connecting in the way of the dragon along with the. Oh my goodness, he will not be lucky to survive. And that's one more kill secured by the side of Team Armageddon. They are suffocating Team Best or Bust as they're struggling so much to even find room to walk inside their own jungle. Devi, this is again a onslaught coming in from the side of Team Armageddon. Yeah, they are just playing with the mentality of best of bus at this point, because looking at the build so far, only one build for both the XP laner and the room, and it's gonna be really hard. But look at it, another side. Man, that was a bit too, dirty coming in from the side of Team Armageddon as they're just styling on their members and members after members being taken down from the side of Team Best or Bust as they're trying to crack open that mid lane. There you can see the knockup does connect, but he will not follow that through as the Lord is just a few seconds away from spawning as they are just trying to find a bit more map control, I would say, to take down the Lord. And Team Best or Bust, they are losing so much tempo in this game. Yeah, it's gonna be very hard for them to come back with this kind of gold lead, 9k into their hands, and mostly it's going on Ito too, and as well as Charlie Brown onto that studio. They are just looking for something all the time. But look at that, another kick. Hey, the kick does connect, and Ken Sato will be the victim of it as J4 will be getting taken down as the rest of the members are trying to collide on the collapse on the members, but the knocker will be there, but not really helping as there's another kill. Make it 2, make it 3 as a double kill will be secured. And wait, it's a clap back coming in through. Both the teams are losing members left and right. A bit too forced team fight, I would say, from the side of Team Armageddon as they are finally made to pay for their aggression. Yeah, this is the only time they are gonna be paying for that aggression, because this is a disciplined team, and whenever they are gonna be going for something, they have to be very calculative yet again. So the deny on the minion is gonna be up to. This is a kind of an annoying maker gameplay, right? So just trying to deny the minions to their opponent, not letting them farm up as much as possible. And with a hero that's dependent on the equipment like the Herod too, it's gonna be hard because he does need a very expensive item to have that power spike like the Holy Crystal too, and he's so far behind in comparison to the carry to Ito. He's losing so much again. Look at that. That's a tease coming up on J4 onto the toe. And they are not really starting the Lord just yet, but they are just teasing out the lanes time and time again. Look at the conceal. Ooh, the way of the dragon onto that Ken Sato once again, but there is that counter engage coming in. You guys can see the Hayabusa trying to go for the backline flank onto Charlie Brown, but he does not have that enough damage. The Joy is going in with the beat. Will be taking Ken Sato, not a lucky fellow in this game, as a shortcut was just used, but not to any avail, as the members could not help him live that off team fight. But man, oh man, aggression once again you can see is constantly there from the side of Team Armageddon as they're not getting punished. That last punish that was there on the mid lane we were talking about, it will not come again anytime soon as they will be much more careful, taking on those fights, and the goal lead is already of 9k. And man, how do we even get out of that is a question. They have to they have so much to cover. Like you mentioned, the Harith needs so many items before he can come online, and so does the Hayabusa. That early game snowball is never really there for him, and he is still struggling to find farm on the map. And again, they are just trying to play with us, not even taking the Lord as a sliver of HP. So Debbie, what is happening right now? I mean, they are waiting for the Lord just so that it can spawn in the perfect time as their super minions too. Look at that. Oh wait, I know what they did. Wait, Debbie, I know what they were doing. Okay. They were trying to get it enhanced. They were trying to get it enhanced for the 12-minute slot. So that's what they were doing. Okay, wait. They were not playing with us. They were just waiting for it to get enhanced, but it doesn't get enhanced like that. Yeah. They're more responsible than that. Okay. Yep. So the spawn timing is also perfect, I would say, because they want the Lord instantly going into the mid lane as well, because they want the super minions together, another wave, and they want a wave with the Lord too. So yeah, this is a micro gameplay that we are not familiar with, because we know it's there, but none of the members, the squads that we know have used this kind of composition style. But look at that guy.
Hey, two-man getting knocked up out there, but the way of the dragon not on the right side as Team Armageddon are losing ground. As you can see, their aggression is finally being punished, but the joy will also be getting taken down at this point. Both the teams are going at it. There's a double kill by the Harith as they are successfully able to defend as it's a 3v2 situation. The Hayabusa going in, finally getting the shutdowns, and that is a wipe out at Okay, the 13th minute of the game here, Debbie. Finally, finally some finally. for that Hayabusa in this game. They find a bit of hope, a sliver of hope to get a comeback in this game potentially. A great regeneration coming up on the side of best or bust. This is the spacing that they needed. This is the response they were looking for since the start of this game. Even in game one, they were looking for these kind of gameplays, but they couldn't find it because of the discipline coming out from Megadan. But now they let it go a little bit, and they have to be forcing all the spacing that they need. Well, look at that! Look at that! Hey, the way of the dragon on to that member Soirang trying to still survive. He's still there with a sliver of HP, but he should be careful. He's taking a lot of Oh, damage as we'll be falling down as Ken Sato again. The shortcut does get used, but this is not really good. They are losing members for their side as Team Armageddon are they're just ahead and that they're just exploiting that fact. The damage is much higher than their opponents. So at this point, they are just lacking damage. As you can see, the Joy again going in with the beats, electrifying beats, dealing a lot of damage as a minion are still there trying to lock in the base as Hayabusa will be falling as they're trying to oh, end this game and they will be successful. Team Armageddon. Man, they have ah, broken the defenses here, Debbie, for the side of Team Best or Bust. this team. This team is perfect. It's perfect. There is this, the synergy, even the way they were losing the discipline too, right? It was so on point. I would say, they have so much into their kit. They have so much knowledge of this game. They know where the timing of the what one's gonna be, like how where the super minions are gonna be coming in, and they try to break out the defenses, and they were successful in doing so too. Even if they were losing the members, they miscalculated just a little bit, but then the reply, always the response is always good for AE. They were always looking for plays. They were in the driver's seats time and time again. Nothing Best or Bus can do. Even with the chains up in their lineup too, there was no response. On Ken Sato onto that team, he did kind of look for some kind of set, some kind of plays onto that shortcut. They managed to do so, but then the response is always quick for Armageddon because they don't have any weak heroes onto their side. They have the carry, but the carry is still well protected by Cho. And even if they want to look for their mates, the mates is Ryota onto that Joy. There's nothing you can do to catch out the Joy with no suppression. So there's a lack of suppression coming out from the side of Team Best or Bus again. No answer for this Joy too. So it's kind of hard. The only way they could take this game was try to take down Ito onto that carry, but then he's still well protected and he have another kind of sustainability too with the damage as well, the blink skill and the flicker too. There wasn't any kind of open space for Best or Bust to dive in. It was too much for Armageddon. Hey, they were completely steady their entire game. They had a bit of falls here and Yeah. there, but they were really steady the entire time. And despite having that chip, despite having that Hayabusa, like you mentioned, there was no opening for their teams. They were always constantly on check with the Chow going in onto that Kensato. We were talking about it. The chip could the only thing he had was the shortcut, and apart from that, he did not have that sustainability, which kind of showed this entire game. And that was the point where they could not even go for a confident engage. They were getting melted down every time. And if your tank is getting melted down instantly, the rest of the members will also be hesitant to just go for that kind of play. So I think it was really well calculated. Even the Joy pick was so on point. It did the Yeah. work it was supposed to do. And kudos to them for playing it out perfectly. And man, this was a well played match, I would say, for the side of Team Armageddon as they are a worthy contender to be a champion in our finals. Which is going to happen real soon in the Battle of Ancients. So I'm really looking forward to that matchup. So man, I'm a bit stunned to say you were talking about that they like to go for a bit of the kind of draft where they try to experiment a lot of things, but it's really going to be a heck of an interesting game when they will take on a team Theek Hai Bhai on the finals. So Mm. I'm looking forward to it. I think most of our viewers are. What about you, Debbie? Oh, I'm very excited because
They don't make it here just by chance, right? They are looking for a fight. They are climbing obstacles time and time again. They were swimming the seas, climbing the mountains. But in the end, for best of us, their mountain was too high. It was Armageddon. So for Armageddon, they are going to be facing, like you mentioned, TK Pie into the finals. And we have to see what this team is going to be bringing up for. Because you know what? This team is what I'm looking forward to all the time. Because they always bring out the weirdest experiment and always make it work. So it's gonna be a fun match to watch. So I feel like this is the finals are what we are gonna be looking forward to for the viewers, like you mentioned too. Yep. Let's see if they can bring Armageddon on their opponents, or will Team TK Bhai just have that cool attitude like TK Bhai, tum wahi pe ruk jao. But let's see what is gonna happen. There's a lot of questions on our minds, and it's gonna get answered in the final. So don't miss on it, guys, because this is gonna be a really, really neck to neck battle between these two teams. So let's see how will it break out. But for tonight, this is gonna be it from our end. It was an amazing experience to cast these games, as well as have you lovely viewers watching with us. So I think with this, me and Debbie will be signing off for the night. And Debbie, before we sign off, do you have anything to add to that? I'm just so thankful that people decided to tune in because these teams, two teams, both of these teams, even best or bust, they deserve a recognition because the way they're playing, the way the heroes are, is so hard. Even if we are the caster, we won't be able to do half of what this team does. So keep supporting these two teams, and you know what, keep supporting us too. This channel, me and Singyu too, if you wanna, that's optional. But yeah, thank you for everything. Hey. Yes, do subscribe, like, and share the stream, guys. And we will seeing you real soon. We'll be dropping up the schedule on our channel as well as on Discord server. So keep a note of that. And with that, me and Debbie are, having an awesome, amazing night with these games that we have casted. So let's meet you guys next time on the finals for the Battle of Ancients. So with that, good night, guys. See you off real soon. Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon'